Good evening to everyone. I hope all are well. And today topic is appeal and revisions. Yesterday we had good discussion on the offense penalty chapter, correct? And today is the appeal and revision that we will complete in the today class only. And after that, we will have only 2 more classes. What will be the GST on the sale of the developed plot? Will it be a composite supply? What would the developed cost borne by the developer? We'll discuss. हेमंत हम लोग है ना इस क्लास में एंड जब आएंगे ना एंड में आएंगे ना तब इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है? अभी एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक. तो अपील एंड रिवीजन. Taxation law impose the various obligation on the taxpayer, such as obligation are broadly of the two kind: levy related, that is scope of supply, taxable value, tax rate, and procedure related, like obtaining the registration, filing the return, manner of depositing the taxes, etc. Taxpayers' compliance with these obligations is verified by the tax authority by exercising the various power, such as scrutiny, audit, anti-evasion proceeding, etc. As a result of which, sometimes there are the situation of actual or perceived non-compliances. If the difference in the view persists, it results into the dispute which is then required to be resolved. Under tax law, on any given set of the fact and legal provisions, there can be the different opinion or viewpoint. Hence, it is likely that taxpayer may not agree with the adjudicating order passed by the tax authority. It is equally possible that department may itself not agree with the adjudication order. ये point underline करना. कई बार क्या होता है, commissioner is not satisfied with the order passed by the lower authority. Like, let's say there is an assistant commissioner who has passed the order in favor of the taxpayer, but commissioner is of the view that order is not correct. So he can also file the appeal against the departmental order only. It is for the reason the tax statute provide for an appellate mechanism to both the sides. In legal parlance, appeal is a timely resort for review by the higher authority where aggrieved party requests a formal change to an existing decision. कई बार ये डिस्कशन आता है ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि अपील क्या स्टैच्यूटरी राइट है या फंडामेंटल राइट है. व्हाट इज द डिफरेंस? Difference is it being secured by the Indian Constitution? The answer is no. अपील आपका एक स्टैच्यूटरी राइट है. What does it means? Statutory right means अगर अपील का प्रोविजन is being given in the related law, then only aggrieved party can file the appeal. Otherwise, no, it cannot. So, assume करता हूं जीएसटी में, लेट्स से देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील. एज्यूम कर लेते हैं कि जीएसटी में कोई प्रोविजन नहीं अपील का, तो क्या अपील फाइल हो सकती है? आंसर इज नो, बिकॉज अपील इज नॉट द फंडामेंटल राइट, अपील इज द स्टैट्यूटरी राइट. नाउ in the legal parlance, appeal is the timely resort for review by the higher authority where aggrieved party requests a formal change to an existing decision. Since the right to appeal is the statutory right, that is right conferred by the statute also places factor on the exercising of this right. Time limit, requirement for making the pre-deposit before the appeal can be heard by the competent authority. Are the example. India has adopted the dual GST model. What does it mean? It means the CGST and SGST. On a particular interstate supply, tax can be levied by the center and state both. And if it is interstate supply, tax can be levied only by IGST, interstate. That interstate supply पे सिर्फ IGST levy होता है. Does this mean that if a taxpayer is aggrieved by any proceeding, he will have to approach both authorities separately for exercising his right of the appeal? The answer is no. अगर आप कहेंगे कि अगर कोई सप्लाई इंट्रास्टेट है तो उसके ऊपर आपके 2 टैक्स चार्ज होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और इंटरस्टेट अगर सप्लाई है तब भी वो डिवाइड होता है सी एंड एस के बीच में. तो अगर कोई एग्रीव्ड है
तो क्या अपील भी दोनों जगह फाइल करनी पड़ेगी? द आंसर इज नो, ओनली वन पावर, ओनली वन वन अपील टू बी मेड। कहां पे अपील करनी पड़ेगी? जहां पे उसका जुरिस्डिक्शन अलॉट हुआ है। सर जुरिस्डिक्शन कैसे मालूम चलता है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आपको सिस्टम अलॉट करता है कि इट विल बी ईदर जुरिस्डिक्शन एज ए सेंटर और स्टेट। तो आपका जो नंबर है, जो जीएसटी नंबर है अलॉट हुआ है, वो आपको किस अथॉरिटी ने दिया है? इफ इट इज स्टेट देन योर जुरिस्डिक्शन फॉल विद द स्टेट, एंड इफ इट इज सेंटर देन इट इज फॉल द it is jurisdiction office will be lie with the center officer only. यहां पे एक पॉइंट आता है, क्रॉस एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आता है, पॉइंट आता है, नॉट क्वेश्चन। तो वो हम जब भी आएगा देन वी विल डिस्कस। जीएसटी लॉ आ भी गया, मेक द प्रोविजन फॉर द क्रॉस एम्पावरमेंट बिटवीन सी एंड एस टू इंश्योर दैट द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द सीजीएसटी इज ऑल्सो ट्रीटेड द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द एसजीएसटी और वाइस वर्सा। ये क्रॉस एम्पावरमेंट क्या है? मान लो मिस्टर ए इज द ऑफिसर ऑफ द सीजीएसटी एंड Mr. B has taken the registration and he has been allotted as CGST department, ठीक है, as a jurisdictional office। तो अब जब भी वो सीजीएसटी डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करेगा, लेट्स से रजिस्ट्रेशन का, रिफंड का, तो मान लिया जाएगा, इट विल बी डीम्ड दैट दिस मिस्टर बी इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर द एसजीएसटी एक्ट। तो इसको कहते हैं क्रॉस एम्पावरमेंट। मतलब वो ऑफिसर तो सी का है, बट इट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड ही हैज द power or he will be considered as S or vice versa. A proper officer can issue the order with respect to both the CGST as well as SGST. GST law provides that where the officer under one act has passed an order, appeal, review, revision, rectification will be only with the proper officer of that act. Accordingly, if any order is passed by the proper officer under, say, Haryana SGST, any appeal, review, revision, rectification will lies only with the proper officer, that is Haryana GST. This chapter 18 this chapter 18 deal with the section 107 to 121, and it is given in the rule 108 to 116 prescribe the provision relating to appeal and revision, ठीक है। now एक ओवरव्यू की बात करते हैं। hierarchy of the appeal and revision, order passed by the adjudicating authority, the first order, जो भी order pass करने का right रखता है, that all will called as an adjudicating authority। अगर adjudicating authority के order से अगर आप satisfied नहीं है, then you can file the appeal with the appellate authority। You can file the appeal with the appellate authority, and appellate authority के order से satisfied नहीं है, तो appellate tribunal, you have to approach appellate tribunal। देन ऑर्डर यहां पे ट्रिब्यूनल में दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इफ इट इज पास्ड बाय द प्रिंसिपल बेंच विच इज लोकेटेड इन दिल्ली, देन द अपील अगेंस्ट द प्रिंसिपल बेंच विल लाई विद द सुप्रीम कोर्ट। एंड अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल है, लेट्स से इट इज नॉट द प्रिंसिपल बेंच, इट इज द स्टेट बेंच, तो स्टेट बेंच के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो भी ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट में अपील आपकी हाई कोर्ट में होगी, और हाई कोर्ट के अगेंस्ट में अपील आपकी सुप्रीम कोर्ट में होगी। देयर आर द 4 लेवल ऑफ द अपील। है पहला लेवल ऑफ अपील, पहला है अपीलेट अथॉरिटी, सेकंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, थर्ड है हाई कोर्ट, एंड फोर्थ है सुप्रीम कोर्ट। एक बार आप चैट में टाइप कीजिए, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल स्टेट बेंच है या एरिया बेंच जिसकी अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में होगी, आप हाई कोर्ट में अपील फाइल नहीं कर सकते। जिसके अगेंस्ट में अपील विल डायरेक्टली लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट। कौन सी बेंच में? प्रिंसिपल बेंच या स्टेट बेंच। द ऑर्डर पास बाय द विच बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल जिसके अगेंस्ट में अपील वुड लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, नॉट द हाई कोर्ट। द आंसर इज प्रिंसिपल बेंच। आंसर इज प्रिंसिपल बेंच। एक पॉइंट और याद कर लीजिए, प्रिंसिपल बेंच is only have the power
to deal with the matter which is relating to the place of supply. कोई एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें वन ऑफ द मैटर इज पीओएस, तो उस ऑर्डर की अपील आपकी स्टेट बेंच में नहीं होगी. दैट अपील विल बी विद द अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच. इट इज नॉट लाइक कि अपीलेट अथॉरिटी देन स्टेट बेंच देन प्रिंसिपल बेंच देन हाई कोर्ट. ऐसा नहीं है. बोथ आर इक्वल पावर. प्रिंसिपल बेंच एंड स्टेट बेंच बोथ आर इक्वल पावर. ओनली डिफरेंस क्या है? स्टेट बेंच विल हर्ड एवरी मैटर एक्सेप्ट पीओएस. अगर कोई ऑर्डर ऐसा है जिसमें वन ऑफ द मैटर इज पीओएस, देन वो जो ऑर्डर है पास्ड बाय द अपीलेट अथॉरिटी, फर्स्ट अपील, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कहां पे होगी? स्टेट बेंच में नहीं होगी, प्रिंसिपल बेंच में होगी. Initially, when the law was made, then there was a concept of area bench, regional bench. That concept has been eliminated, omitted. अब आपके पास में सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट है, दो ही तरह की एपीलेट ट्रिब्यूनल है. एक तो प्रिंसिपल बेंच और एक आपका स्टेट बेंच. दैट्स इट. सिमिलरली एक रिविजनल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज द टाइम लिमिट, विच ऑर्डर कैन बी रिविजन, कैन बी अप्लाइड फॉर द रिविजन, दैट वी विल डिस्कस. बट ऑर्डर पास बाय द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू द रिविजन अथॉरिटी, तो उसकी आप रिविजन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. एंड रिविजन अथॉरिटी के अगेंस्ट में अपील विल अगेन इट विल गोज टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. अब एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? डाउट था. बताएं. सत्यम, सानियम, बाफना, कौन? बताएं, जो भी आप बोलना चाहते हैं प्लीज आस्क. सर इसमें मेरा डाउट ये था कि कोर्ट में अगर अपनी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो? रिजेक्ट कैसे? मतलब आपने अपील फाइल की जी और अपील को एक्सेप्ट ही नहीं किया. जी. कई बार होता है, जैसे पीआईएल फाइल होती है, रिट हम फाइल करते हैं, तो अगर वो ग्राउंड उनको समझ में नहीं आता, देन दे विल रिजेक्ट, दे विल नॉट एक्सेप्ट. इट मींस आपके पास में वो जो ऑप्शन था, दैट ऑप्शन हैज बीन रिजेक्टेड. ओके. बट वन पॉइंट, कोर्ट में हम जाते हैं, लेट्स से फॉर दैट पर्टिकुलर रिट पिटिशन एटसेट्रा. बट अगर कोई रिजेक्शन होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. लेट्स से मैंने एक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल की एंड दैट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड बाय माय ऑफिसर. करेक्ट? तो वो तो रिजेक्ट हो गया मेरा एप्लीकेशन. तो जब वो ऑर्डर इश्यू करेंगे, रिजेक्शन ऑर्डर, दिस ऑर्डर बिकम द ऑर्डर बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड फॉर विच आई कैन फाइल द अपील. तो रिजेक्ट, जैसे मैं रिफंड एप्लीकेशन फाइल करता हूं एंड इफ इट इज रिजेक्टेड, नॉट गिवन द ग्रांटेड द रिफंड, दे विल रिजेक्ट, देन दे विल इश्यू द ऑर्डर. और वो ऑर्डर इट विल कम इनटू द एम्बिट ऑफ अपील. तो उस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं फर्स्ट अपील फाइल कर सकता हूं. फर्स्ट अपील, देन ट्रिब्यूनल, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट. वो राइट हमारे पास में हमेशा रहेगा. ठीक है. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी जो अपॉइंट हुई है या ऑथोराइज्ड है, पास एनी ऑर्डर या इवन डिसीजन, पॉइंट टू बी अंडरलाइन. अगर कोई डिसीजन भी पास हुआ है तो दैट इज ऑल्सो बीइंग अपीलेबल, बट डज नॉट इंक्लूड. कौन इंक्लूड नहीं होते किसमें? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में वो लोग इंक्लूड नहीं होते जो उसे हायर रैंक के हैं, जैसे सीबीआईसी. ठीक है. रिविजनल अथॉरिटी, एडवांस रूलिंग, अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग. तीन याद रखना, AAR, AAR and National Appellate Authority for Advanced Ruling. तीन we will discuss in the respective chapter. Adjudicating authority means an authority appointed or authorized to pass any order or decision under this act, but does not include the CBIC, Revisional Authority, the Authority for Advanced Ruling, Appellate Authority for Advanced Ruling, National Appellate Authority for Advanced Ruling, Appellate Authority
द अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड अथॉरिटी रेफर टू इन सेक्शन 171. ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी. एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी क्या होती है? in the when the GST was introduced, then certain additional benefit was given. For example, मैं प्री जीएसटी रिजीम में हूं और मैं जीएसटी में आया तो मुझे कुछ एडिशनल टैक्स का बेनिफिट हुआ. इधर आई हैव मतलब जो मैं टैक्स रेट चार्ज करता था इट हैज बीन रिड्यूस्ड और आई एम गेटिंग द एडिशनल बेनिफिट ऑफ आईटीसी. 171 सेक्शन ये कहता है अगर आपको दो बेनिफिट में कोई भी बेनिफिट हुआ है, किसको? सप्लायर को. इधर रिडक्शन इन द टैक्स रेट और इंक्रीज इन द आईटीसी. तो जब ऐसे दो बेनिफिट होते हैं ना, वो दैट बेनिफिट आई बीइंग ए सप्लायर कैन नॉट रिटेन विद मी. आई हैव टू पास टू माय कस्टमर, टू माय बायर. एंटी प्रॉफिटरिंग जब भी आपका ट्रांजिशन होता है, लेट्स से बिफोर जीएसटी टू जीएसटी, और सेकंड एग्जांपल दैट आज किसी टैक्स की रेट की जीएसटी रिजिम में आज टैक्स रेट 18% था और लेट्स से टुमारो दे हैव रिड्यूस्ड द टैक्स रेट एज 12%. तो जो 6% का रिडक्शन है, आई कैन नॉट इंक्रीज माय प्रॉफिट बाय 6%. मुझे ये 6% रिडक्शन अपनी सेलिंग प्राइस में करना पड़ेगा. अगर मैं ऐसा नहीं करता तो देन आई वे मे फॉल अंडर द एंटी प्रॉफिटरिंग केस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देन appellate authority. Appellate authority means an authority appointed or authorized to hear the appeal as referred to in section 107. Appellate authority is normally called as first appeal. इसे हम कमिश्नर अपील भी कहते हैं. What is that first appeal? जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन पढ़ी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट में जब अपील फाइल की जाती है, देन दैट अपील विल बी heard by the appellate authority. So first appeal file की जाती है, that will be with the appellate authority. ठीक है. Appellate tribunal means the GST appellate tribunal constituted under section 109. Authorized representative means representative referred to in section 160 116. Board commissioner, board मतलब CBIC. Commissioner means the Commissioner of Central Tax and include the Principal Commissioner of Central Tax appointed under Section 3 and Commissioner of IGST appointed under IGST. Divisional Authority means an authority. Divisional Authority कौन है? वो authority जो कि appoint है या authorize है for revision of the decision or order as referred to in Section 108. ठीक है. अब हम first appeal की बात करते हैं, that is appeal to the appellate authority. That is Section 107. Order appealable to appellate authority. An appeal against any decision or order passed by the adjudicating authority under CGST, SGST, UTGST, then appellate authority के पास में जाकर आप अपील फाइल कर सकते हैं. It is important to note that only aggrieved person who can file the appeal. Appeal must be against the decision या order passed under this act. टाइम लिमिट कितना है? 3+1. 3 month नॉर्मल टाइम लिमिट है. 3 month फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. नहीं, ये वर्ड आप हमेशा याद रखना, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेट ऑफ कम्युनिकेशन? दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली. बट डेट ऑफ ऑर्डर एंड डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर मे बी डिफरेंट. इसका क्या मीनिंग है? दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली. बट 3 month का जो टाइम लिमिट है, that is from the date of communication, not the date of order. ठीक है. And condonation of the delay on the sufficient cause. अगर मान लो कोई टैक्स पेयर है और उसकी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेट्स से, ठीक है, and he has the sufficient reason because he cannot file the appeal. In that case, he can submit the reason why he need the
condonation of the delay for filing the appeal and the maximum time limit is 1 month. मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में अगर अपील फाइल करते हैं दैट इज मैक्सिमम 4 मंथ। अब कई बार ऐसा लगता है कि सर 1 ईयर 2 ईयर में भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल होती है, नहीं, आंसर इज नो। However, sometime the CBIC giving the relaxation or amnesty scheme, हमने कई बार सुना है कि amnesty scheme आती है। amnesty scheme मतलब हमें बेनिफिट दिया जाता है कि जो ऑर्डर टाइम बार्ड हो चुके हैं उसके अगेंस्ट में भी आप अपील फाइल कर सकते हैं। या कई बार पीपल आर यूजिंग द अप्रोच ऑफ द रिट। सी वन फंडामेंटल क्वेश्चन टू ऑल, क्या ये जो टाइम एक्सपायर हो गया then I can go to the High Court directly and ask him to condone the delay? Answer is directly no. But अगर आपको लगता है let's say the order has been passed ex parte or order has not been communicated at all, communication is important, तो उस ग्राउंड में जहां पे आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बार हुआ है, जहां पे वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में, उस केस में आप रिट के थ्रू हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं। बट रिट इज नॉट द रूट ऑफ अपीलेट मैकेनिज्म। रिट एक अलग रूट है जहां पे किसी टैक्स पेयर को लगता है आई हैव बीन एग्रीव्ड बिकॉज कि ये फंडामेंटल मेरा प्रिंसिपल वायलेशन हुआ है, देन आई कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट एंड उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मेरा केस सुना जाए थ्रू रिट। द फॉर्म of appeal. Normally, appeal will be submitted in the APL 01 online. ठीक है, along with the relevant document electronically. लेकिन और a provisional acknowledgement is issued to the appellant immediately. However, an appeal to the appellate authority may be filed manually. Appeal to the appellate authority may be filed manually and this can be the question because ये revision amendment in the law। क्वेश्चन आ सकता है theoretical क्वेश्चन कि अपील क्या मैनुअली फाइल हो सकती है? आंसर इज ओनली इन 2 केस। कब? अगर कमिश्नर नोटिफाई करते हैं तो, या सेम कैन नॉट बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर टू बी अपील अगेंस्ट द कॉमन पोर्टल। मतलब कई बार क्या होता है जब कोई डिसीजन या ऑर्डर पास हुआ और वो इलेक्ट्रॉनिकल अपलोड नहीं है। सी APL 01 कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन व्हेन द डिसीजन या ऑर्डर इज अवेलेबल ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन है ही नहीं तो उसकी अपील कैसे फाइल होगी? तो इन्होंने सेकंड ऑप्शन अभी ऐड किया है बिकॉज ऑफ एनी टेक्निकल रीजन अपील कैन नॉट बी फाइल्ड बिकॉज ऑर्डर ही नहीं था। इन दैट केस यस, मैनुअल अपील कैन बी फाइल्ड। Again, acknowledgement shall be issued immediately. Where the decision or the order appealed against is uploaded on the common portal shall be a final acknowledgement indicating the appeal number shall be issued by the appellate authority or an officer authorized by him in this behalf in the APL 02। मतलब वो acknowledgement आपको immediately issue कर देंगे। The date of issue of this provisional acknowledgement shall be considered the date of the filing of appeal। जो डेट आपको दी गई है APL 02 में, जो डेट इशू हुआ है, जिस डेट को इशू हुआ है वो डेट मानी जाएगी डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द अपील। अब सेकंड केस आ गया, अगर ऑर्डर अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, नॉट अपलोडेड। नाउ देयर आर 2 केसेस इंपॉर्टेंट। नॉट अपलोडेड ऑनलाइन, देन appellant shall submit the self certified copy of the decision। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था इन द GST लॉ जब आया था, अब ये बाद में अमेंडमेंट हुआ। अर्लियर इट वाज आस्किंग दैट आई हैव टू टेक द सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम द डिपार्टमेंट। मतलब सपोज एक ऑर्डर आया, वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, ठीक है, देन आई हैव टू विजिट द डिपार्टमेंट, टेक द एक्नॉलेजमेंट ऑन द ऑर्डर का कॉपी एंड देन आई हैव टू अपलोड द सेम। बट अब ये कह रहे हैं कि सेल्फ सर्टिफाइड वुड ऑल्सो बी डीम टू बी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऑनलाइन अवेलेबल है तो आपको सेल्फ सर्टिफाइड भी नहीं करना है। अगर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस यू नीड टू certify only self certification within a period of 7 days from the APL 01. Final acknowledgement indicating the appeal number shall be issued to by the appellate authority or an officer authorized by him in this behalf in the APL 02, and date of issue of the provisional acknowledgement shall be considered the date of the filing of appeal. Further, the said self-certified copy is not submitted within a period of 7 days. मान लो मैं submit नहीं कर पाया तो क्या है? Then the date of the filing APL 01 will be the date of the submission of the copy. मान लो मैंने 15 दिन बाद सबमिट किया तो क्या है, डेट ऑफ अपील, जो डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ अपील है वो कौन सी हो जाएगी, जिस दिन मैंने वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए. अपील शैल बी ट्रीटेड एज फाइल्ड ओनली व्हेन द फाइनल एक्नॉलेजमेंट इज इशूड. तो मेक श्योर अगर आपने अपील फाइल की है और आपके पास APL 02 का कॉपी नहीं है, देन इट मींस योर अपील इज नॉट सबमिटेड. अब बात करते हैं मैंडेटरी प्री डिपॉजिट की. Just quickly give me the answer. Just quickly give me the answer. The name of the two benches in the appellate tribunal. Name of the two benches of the GST appellate tribunal. Principal bench and state bench. Principal bench and state bench. Mandatory pre-deposit. No appeal can be filed before the appellate authority unless the specified amount of the pre-deposit is made by the applicant. The concept of the pre-deposit is discussed separately under the heading number 7. तो डिपॉजिट करना पड़ता है. डिपॉजिट सिर्फ टैक्स का होता है, कई बार 10%, 20%, 25%. तो अलग अलग प्री डिपॉजिट है, दैट वी विल डिस्कस इन सम टाइम. बट यस, याद रखना कि आपने अगर बिना डिपॉजिट के लिए अपील फाइल की, इट मींस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड दैट इट हैज बीन, कि अपील आपने फाइल कर दी है. अभी तो हमने एग्रीव्ड पर्सन की बात की. Also, we have understood that even application can be made by the department before the appellate authority. कब? जब डिपार्टमेंट खुद एग्री नहीं है. जो डिसीजन या ऑर्डर पास किया है किसने? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने. एनी ऑर्डर और डिसीजन पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर डिपार्टमेंट को, लेट्स से कमिश्नर को ये लगता है कि नहीं ये ऑर्डर गलत है, इन दैट केस they can file the appeal against the decision of the department. 107 subsection 2 provide department can also file the appeal referred as review application. इसको हम normally layman language में review application बोलेंगे. Order against which the application can be filed before the appellate authority. The commissioner, either on his own motion or request from the state or UTGST commissioner, examine the record of any proceeding in which an adjudicating authority has passed the order. क्या चीज के लिए एग्जामिन करेंगे? टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द लीगलिटी और द प्रोप्राइटरी ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर. तो कमिश्नर क्या करेंगे? लेट्स से आई एम अ कमिश्नर ऑफ द CGST एंड आई विल एग्जामिन द रिकॉर्ड एंड देन आई विल चेक वेदर इट इज लीगली करेक्ट और इट इज नॉट करेक्ट. टाइम लिमिट और फाइलिंग द अपील, देन इन केस में टाइम लिमिट कितना है? 6 months. प्लीज क्विकली गिव मी द आंसर. व्हाट इज द टाइम लिमिट? अगर एग्रीव्ड पर्सन, टैक्स पेयर अगर एग्रीव्ड है तो उसके लिए कितनी टाइम लिमिट है फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन और अपील? फॉर फाइलिंग द अपील व्हाट इज द टाइम लिमिट? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द अपील बाय द एप्लीकेंट, मतलब एग्रीव्ड पर्सन? टैक्स पेयर, लेट्स से ही इज एग्रीव्ड, देन व्हाट वुड बी द answer is
3 plus 1. Answer is 3 plus 1. Very nice, very nice, very nice. 3 plus 1. ठीक है, अब हम बात करते हैं, बट डिपार्टमेंट के पास में कितना, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड कंडोनेशन, कितना है, 1 महीने का ऑब्वियसली. फॉर्म इट विल बी APL 03. जब डिपार्टमेंट अपने ही ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करता फॉर द टू द अपीलेट अथॉरिटी, देन द टाइम लिमिट वुड बी 6 plus 1 and the form would be APL 03 along with the relevant document, and electronically and the provisional acknowledgement will be issued. क्या ये अपील जो फाइल कर रहे हैं वो मैनुअली हो सकती है? यस, अगर कमिश्नर नोटिफाई करे तो. या इलेक्ट्रॉनिकली फाइल नहीं कर सकते ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डिसीजन. कई बार क्या होता है, सी दैट इज फंडामेंटल राइट, आई कैन से. नॉर्मली क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो टाइम लिमिट होती है ना, एंड रीजन होता है कि उस टाइम लिमिट में अपील फाइल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एनी जेन्युइन रीजन. तो डिपार्टमेंट को एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप सोचिए, एंड यू कैन गिव द वन मंथ का एक्स्ट्रा टाइम. नॉट डिपार्टमेंट, इन दिस एग्जांपल अपीलेट अथॉरिटी. जैसे मैंने कहा ना कि कोई कोविड में एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, एंड ही इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इन 3 months, लेट्स से, देन ही कुड नॉट फाइल द अपील, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है. कंडोनेशन एक बेसिकली फंडामेंटल राइट है. अपॉर्चुनिटी, अगेन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर कोई अपील फाइल नहीं कर सकता मतलब जो डिमांड उसके अगेंस्ट में पास हुई दैट विल बी कंफर्म्ड. ठीक है, इट शुड बी, यस, रीजन, जेन्युइन रीजन होना चाहिए. एब्सोल्युटली करेक्ट पक्का. हाउएवर, अपील कब मैन्युअली फाइल होगी ये आप याद कर लेना प्लीज, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दे माइट आस्क 1-2 नंबर का क्वेश्चन कि अपील कब मैन्युअली फाइल हो सकती है. पहला, अगर कमिश्नर ने नोटिफाइड किया है. दूसरा, अगर ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल नहीं है. डिसीजन और ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में अपील करना चाहता है दैट इज नॉट अवेलेबल ऑनलाइन. मतलब उसके कारण क्या, आप अपील फाइल नहीं कर पा रहे. यू कैन नॉट फाइल द अपील ऑनलाइन बिकॉज ऑर्डर इज नॉट अवेलेबल. Then, where the decision order is uploaded on the portal, final acknowledgement indicating the appeal number shall be issued by the appellate authority or an officer authorized in this behalf in APL 02. Date of issue of acknowledgement shall be considered as date of filing of appeal. पहला बात, जब डिसीजन या ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है. दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल नहीं है तो उन्हें क्या करना है, द अपीलेंट शैल सबमिट द सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days. 7 days की काउंटिंग कहां से होगी, APL 03 की डेट ऑफ फाइलिंग से. अगेन दे विल इशू द एक्नॉलेजमेंट, और डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट विल बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील. Assume that they could not submit within 7 days self certified copy of the decision or order. तो जब भी वो सबमिट करेंगे, date of the submission of the copy, then that date will be considered the date of the filing of appeal. ठीक है, just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Meanwhile, I request that please type in the chat. Please type in the chat वो कौन सी 2 केस हैं जहां पर आप अपील मैन्युअली फाइल कर सकते हैं. करेक्ट. तो अभी द कमिश्नर नोटिफाई करता है तो ठीक है. एंड सेकेंडली,
Electronically, not possible to file the appeal because non-availability of order. फुली एग्री कर रहा हूं. आगे बढ़ते हैं. Such application shall be dealt with the appellate authority as if it is an appeal against the decision or order against the adjudicating authority. There is no requirement of making the pre-deposit in case of the department appeal. ठीक है. Now, appeal process followed by the appellate authority. पहला, duties of the appellate authority. The appellate authority has to follow the principle of natural justice. What is the meaning of the principle of natural justice? एक सिंपल फंडा है, जब भी कोई डिसीजन उस टैक्स पेयर के अगेंस्ट में लिया जाएगा तो आप उसे सुनेंगे. यू विल गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ द बीइंग हर्ड बिफोर पासिंग एनी एडवर्स डिसीजन. करेक्ट. तो अलाउिंग द रीजनेबल एडजॉर्नमेंट, एंड एडजॉर्नमेंट कितना होगा? नॉट मोर देन 3 टाइम्स. परमिटिंग द एडिशनल ग्राउंड फाउंड रीजनेबल एटसेट्रा. ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी. अपीलेट अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करेगी मे फर्दर इंक्वायरी एंड पास इट्स ऑर्डर इन ओरिजिनल, OIO बोलते हैं इसको, ऑर्डर इन ओरिजिनल, विच में कंफर्म, जो डिमांड थी उसको कंफर्म कर सकता है, विच कैन मॉडिफाई और विच कैन एनल. एनल मींस कैंसिल कर सकते हैं. एंटायर ऑर्डर कैन बी कैंसिल्ड. However, shall not refer back the case again to the adjudicating authority. आपने कई बार सुना होगा कि हाई कोर्ट हैज रिमांडेड बैक द केस टू द लोअर अथॉरिटी. करेक्ट. कि दे विल अगेन हियर द केस फ्रेश by considering all the relevant material fact etc. But जब फर्स्ट अपील होगी, they have to conclude the matter. Either they will accept, they will reject, or they will confirm the demand, they will modify the demand, या they will cancel the demand. NL. बट किसी भी केस में वो मैटर वापस रेफर बैक नहीं करेंगे. Appellate authority can also increase the rigor of the order appealed against by enhancing any fees or penalty or fine in lieu of confiscation, or confiscating goods of the greater value, or reducing the amount of the refund, but this can only be done after giving the reasonable opportunity of being heard. If the AA is of the opinion, that any tax has not been paid, short paid, erroneously refunded, ITC wrongly availed or utilized. Quickly tell me, ये सेम 5 रीजन हमने जीएसटी में कहां पे रीड किए थे? Where we have discussed the same 5 reason in the any other chapter. या कौन से सेक्शन में हमने ये सेम 5 बातें कही थी? Do you remember? You remember these exactly 5 things we have already discussed in some provision. Absolutely correct. Section 73 and 74. हालांकि ये बात आप सेक्शन 122 में भी पढ़ चुके हैं, that we all know. बट मेरा मेन पर्पज आपसे पूछना था 73 74. ठीक है. Then no order requiring the appellant to pay the such tax shall be passed unless the so goes against the proposed order and the order is passed within the time limit specified in section 73. एक और मुझे बता दीजिए, quickly tell me, it is again simply the revision of the earlier chapter. What is the time limit to pass the so-called notice for 73 and what is the time limit to pass the order against 74? मैंने एक जगह SCN पूछा है और एक जगह आपसे ऑर्डर पूछा है. What is the time limit to pass the so-called notice and what is the time limit to pass the order? नहीं. Ashutosh, absolutely correct. You have given the correct time for the SCN and order. Ashutosh, order. In the 74, I am asking the order. R Prasad, perfectly right. 73, yes. 74, right. Absolutely correct. K Prashant. ठीक है, SCN का राइट है.
राइट है. व्हाट अबाउट द 74 का ऑर्डर? व्हाट इज द टाइम लिमिट टू पास द ऑर्डर? हेमंत, सोकोस नोटिस का लास्ट डेट क्या है और ऑर्डर का लास्ट डेट क्या है? हाँ, द टाइम लिमिट is 2 year 9 month for so cause notice and 3 year time limit for order if it is a 73 का notice. 73 का केस. 74 में SCN इशू करने का टाइम लिमिट 4 year 6 month है एंड what is the last day to issue the order? It is 5 year. ठीक है, 4 year 6 month. आशुतोष करेक्ट ना? 74 में हम 6 महीने का टाइम देते हैं. नाउ मैक्सिमम पोस्टपोन कितना टाइम होगा केस? केस कैन बी एडजॉर्न मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स? मैक्सिमम कितना टाइम केस एडजॉर्न हो सकता है? कितना टाइम के लिए केस एडजॉर्न किया जा सकता है? कितनी हियरिंग आपकी पोस्टपोन हो सकती है? यस, मैक्सिमम 3 times. मैक्सिमम 3 times. Appellant may at any time before issuance of the said so-called notice or before issuance of the order, whichever is earlier, in respect of an appeal filed in form of the GST APL 01. Now this point is again newly inserted. This is withdrawal of appeal. APL 01W या APL 03W. कब आप अपील फाइल विड्रॉल कर सकते हैं? You filed the appeal, but can you withdraw the appeal? Answer is yes, you can withdraw the appeal. But what is the time limit? Any time before issuance of the SCN or order in original, whichever is earlier in respect of the appeal filed, you can withdraw that application. However, where the final acknowledgement has been issued in APL 02, the withdrawal shall be subject to the approval of appellate authority. उस केस में अगर withdrawal आप करेंगे तो that will be approved by the appellate authority and such application for withdrawal shall be decided by the AA appellate authority within 7 days of the filing of the appeal. Appellate authority. Now everything will be done by the appellate authority only. Further, any fresh appeal filed by the appellant pursuant to the withdrawal shall be filed within the time limit. Yes, ये बात इंपॉर्टेंट है. अगर मैंने विड्रॉ कर लिया अपील एंड आई एम फाइलिंग द अपील वंस अगेन, इज देयर एनी रिलैक्सेशन? आंसर इज नो. जो सेकंड अपील आप फाइल करोगे दैट शुड आल्सो बी विद इन द टाइम लिमिट. ऐसा नहीं कि आपने ओरिजिनली अपील विद इन द टाइम लिमिट फाइल की, फिर विड्रॉ किया और बाद में आप आफ्टर द एक्सपायरी द टाइम लिमिट टू फाइल द अपील आप फाइल कर रहे हैं. नहीं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. इट सेज दैट any fresh appeal filed by the appellant pursuant to such withdrawal shall be filed within the time limit specified A या B point above as the case may be. तो भी हमने पॉइंट पढ़ा था 3 month, 1 month, 6 month, 1 month. ऑर्डर हमेशा स्पीकिंग होना चाहिए. The OI order in original OIO should always be speaking. Speaking का मतलब क्या है? What is the ground जिसके कारण उन्होंने ऑर्डर पास किए? व्हाट इज द रीजनिंग? किस सेक्शन में उन्होंने पास किया है? अमाउंट क्या है डिफॉल्ट का? इंटरेस्ट कितना है? पेनल्टी कितनी है? एवरीथिंग. इट शैल स्टेट द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन द डिसीजन देयरऑन एंड द रीजन फॉर द डिसीजन. एडवाइजरी टाइम लिमिट क्या होती है? यहाँ पे आपका एक जैसे सो कोज नोटिस का टाइम लिमिट है, दैट इज 2 year 9 month और 4 year 6 month या 3 year ऑर्डर का या 5 year. क्या वो एडवाइजरी टाइम लिमिट है? Yes, strict timelines. Will that timeline be the strict timeline or advisory timeline? वो आपकी स्ट्रिक्ट है. इट इज नॉट एडवाइजरी. मतलब अगर आपने मतलब बीइंग ए डिपार्टमेंट अगर आपने सोकोज नोटिस और ऑर्डर उस टाइम में इश्यू नहीं किया, then that demand itself will be the time bar. Quickly give me the answer. Again, I'm asking the question from the previous chapter. Can you tell me that
the on which type of the demand or on which type of the demand the time limit of 73 and 74 will not be applicable. There is no requirement to issue the so-called notice. It can be directly recovered. It can be directly recovered. कौन सी ऐसी मतलब लाइबिलिटी है which can be directly recovered, which starting with the notwithstanding anything contained in 73 74, मतलब 73 या 74 में कुछ भी लिखा है but the demand can be directly recovered अगर वो डिमांड कैसी है, which type of the demand. एब्सोल्युटली करेक्ट. वो हमने क्लॉज पढ़ा था ना 75 सबसेक्शन 12, सेल्फ असेस टैक्स लाइबिलिटी. सेल्फ असेस टैक्स लाइबिलिटी 1 - 3B, 1 ज्यादा है 3B कम है, that will be considered as a self assessed tax liability. And 75 subsection 12 is starting with the word notwithstanding anything contained, मतलब उस अमाउंट की रिकवरी के लिए there is no requirement to issue the SCN or it's anything, you can directly recover. Thank you so much, R Prasad, Ashutosh. ठीक है, बट यहां पर जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट 1 ईयर है, एडवाइजरी है. द एडवाइजरी टाइम लिमिट मतलब कोशिश करेंगे कि वो 1 साल के अंदर अंदर वो अपील को क्लोज करेंगे, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली होता नहीं है. द पीरियड ऑफ स्टे ऑर्डर बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर. On disposal of the appeal, the AA shall communicate the decision order passed by the appellate to the applicant, respondent and adjudicating authority. जो भी order pass हो वो सभी stakeholder को चला जाएगा. Copy of the order passed by the AA shall also be sent to the jurisdictional commissioner or authority designated by him in behalf, and jurisdictional SGST, UTGST or an authority designated by him in this behalf. Every order passed by the AA shall be final and binding on the parties unless the dispute is taken against the higher appellate forum. Just quickly tell me. So this is the first appeal only, right? Why there will be the stay order by the court or tribunal in between? See, because of any reason there is an stay order. Because कि वो रिकवरी स्टार्ट कर दी है, whatever the appeal has been stay because of any reason. ये होता है, प्रैक्टिकली होता है. तो देयरफॉर दे आर सेइंग अगर किसी भी रीजन के कारण स्टे कर दिया, लेट्स से कोविड आया था तो कोविड में वो डिमांड को स्टे कर दिया था, कोई भी रिकवरी नहीं हो रही थी उस टाइम, लेट्स से, ठीक है. तो उस केस में अगर मैंने अपील फाइल कर दी तो जो 1 ईयर का टाइम लिमिट है तो उसमें वो टाइम लिमिट एक्सक्लूड हो जाएगा. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल बेंच एंड स्टेट बेंच. कौन से वो मैटर हैं जो सिर्फ प्रिंसिपल बेंच सुनेगी, स्टेट बेंच डज नॉट हैव द राइट टू हियर दैट केस. वो कौन से मैटर हैं that which will be heard only by the principal bench and not by the state bench. वो कौन से मैटर हैं सिर्फ प्रिंसिपल बेंच सुनेगी, आंसर इज राइट, इट विल बी द POS. अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से कोई मुद्दा है, अगर if the dispute is relating to the place of supply, then it will be heard by the principal bench only and not by the state bench. If you not agree with the decision of the state bench, then you will file the appeal with the principal bench or high court. अपील कहां जाएगी? अगर आप एग्रीव्ड हैं by the decision of the state bench, you will file the appeal against the decision of state benches to the high court या to the principal bench. Answer is high court. Answer is high court. प्रिंसिपल बेंच एंड स्टेट बेंच ऐसा नहीं कि वो कोई ऊपर है कोई नीचे, ऐसा नहीं है. इट इज नॉट लाइक स्टेट बेंच में केस अगर एग्री नहीं हुआ, एग्रीड है तो एग्रीड पार्टी विल फाइल द अपील टू द प्रिंसिपल बेंच. नो,
इन दोनों में बाइफर्केशन क्या कर दिया, यू विल लिसन ऑल द मैटर एंड यू विल लिसन ओनली द मैटर विच इज रिलेटेड टू द पीओएस। ठीक है, प्रिंसिपल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर अपील करनी है, इट विल बी द where it will file the appeal against the decision of the principal bench, where you will file the appeal against the decision of the principal bench. The answer is Supreme Court. यहां पर ध्यान रखना, प्रिंसिपल बेंच को हाई कोर्ट से रिलैक्सेशन दिया गया, नाउ दे विल हैव द इक्विवेलेंट टू द हाई कोर्ट। तो प्रिंसिपल बेंच के ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, देन अपील विल बी डायरेक्टली विद द सुप्रीम कोर्ट, नॉट द हाई कोर्ट। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। अब जो फर्स्ट अपील है, जिसको हम कमिश्नर अपील कहते हैं, इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, ईदर और। मतलब फर्स्ट अपील जो होगी, दैट इज अ कमिश्नर अपील। वो कौन होंगे, इफ द डिसीजन या ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल की है, वो ऑर्डर किसने इश्यू किया है, एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर इश्यू किया है। तो फर्स्ट अपील क्या होगी, आपकी कमिश्नर अपील होगी। अगर वो ऑर्डर लोअर अथॉरिटी का है, लेट्स से सुपरिटेंडेंट ने इश्यू किया और असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर इश्यू किया, इन दैट केस योर फर्स्ट अपील लाइज विद द जॉइंट कमिश्नर। अगेन प्लीज डू नॉट थिंक दैट they are lower and they are superior, commissioner are superior, joint commissioner are lower. No, it doesn't mean that if you're not satisfied with the order of joint commissioner, you can file the appeal to the commissioner. ऐसा भी नहीं है, they are both are equivalent. just एक वर्क अलोकेशन कर दिया कि अगर कोई डिसीजन या ऑर्डर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, देन इट विल गो टू द कमिश्नर अपील। एंड अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लोअर है, बिलो टू द एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर, तो आपकी जो फर्स्ट अपील लाइज होगी वो जॉइंट कमिश्नर होगी। एंड अगेन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन या ऑर्डर ऑफ द जॉइंट कमिश्नर अपील, देन अपील, फर्स्ट अपील है, अपील विल डायरेक्टली गोज टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। नॉट, ऐसा नहीं है कि इससे अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए देन यू कैन फाइल द अपील टू द कमिश्नर अपील। नो, बोथ आर सेम। 107 में हमने काफी पढ़ लिया। लेट्स समराइज द प्रोविजन वंस अगेन। अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी, सेक्शन 107, commissioner may direct any officer subordinate to him to apply to the appellate authority to determine the specific point relating to the legality and propriety of an order of an adjudicating authority passed under this GST law. क्या टाइम लिमिट है, 6 month नॉर्मल टाइम लिमिट, 1 month कंडोनेशन। फाइल क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड इन द APL 03। एनी पर्सन, ये तो डिपार्टमेंट की तरफ से बात, अगर एनी पर्सन एग्रीड विद द डिसीजन और ऑर्डर बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, देन दे विल फाइल द अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी। टाइम लिमिट 3 month प्लस 1 month। अपील का फॉर्म क्या, APL 01। क्या प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, यहां पर प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा 10%। और 10% किसका, टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी की या कंबाइंड का। द आंसर इज ओनली टैक्स, ओनली टैक्स इन डिस्प्यूट। Appellate authority will give the chance to be heard. Appellate authority may allow the appellant during the hearing to add any additional ground which is skipped or not added in the ground of appeal and can grant 3 adjournment. ये क्या करेंगे, या तो कंफर्म करेंगे डिमांड को, मॉडिफाई करेंगे या एनल करेंगे डिसीजन को, बट वो रिमांड बैक नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिविजनल अथॉरिटी के पावर को। एक बार छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 6-7 मिनट का। विल रिज्यूम एट 7273। तो अशोक जी एक बार 5 से 7 मिनट का ब्रेक स्टार्ट कर दीजिए, देन विल स्टार्ट अगेन। हेमंत, अभी हम स्टार्ट करेंगे ना, तब हमें समझ में आ जाएगा रिविजनल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, सो जस्ट टेक ए ब्रेक ऑफ ओनली 5 मिनट, 7 मिनट। ठीक है अशोक जी।
Now we try to understand what is the concept of revisional authority. ठीक है. Order which can be revised. First, try to understand which order can be revised. GST law provides a mechanism of revision by the revisional authority of the order passed by the subordinate officer. Why? RA, revisional authority, may its own motion or information received from the SGST, CGST commissioner or examination the record of the proceeding. Here, the records include all record relating to the proceeding under the CGST available at the time of examination by the revisional authority. On examination of the case, if the revisional authority is of the view that the decision passed by any officer subordinate to him is erroneous, insofar as it is prejudicial to the interest of the revenue and is illegal or improper, not taken into account material fact whether available at the time of issuance of the order or not, in consequence of the observation by the CAG. अगर रिविजनली अथॉरिटी को लगता है कि जो पास किया गया ऑर्डर है वो इरोनियस है, टू द एक्सटेंट इट इज अगेंस्ट द डिपार्टमेंटल रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, एंड इज इलीगल एंड इम्प्रॉपर, नॉट कंसिडर द मटेरियल फैक्ट, और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, देन ही मे स्टे द ऑपरेशन of such order as he deem fit. Thereafter क्या करेंगे? Revisional authority, after making further inquiry, pass the order including enhancing, modifying or annulling the decision or order. Here the decision include the intimation given by any officer lower the rank of the revisional authority. Along with the order, RA shall also issue the summary of the order clearly indicating the final amount of the demand confirmed. If the RA decide to pass an order which is likely to affect adversely, he shall serve the notice and give the reasonable opportunity of being heard. ठीक है, एक बार कंप्लीट करते हैं, देन वी विल डिस्कस वॉट एवर यू हैव द डाउट. ठीक है, आरए इज द, हाँ आरए डिपार्टमेंट के ऑफिसर ही होते हैं, एवरी रिवीजन ऑर्डर सब्जेक्ट टू द अपील टू द ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बी फाइनल या बाइंडिंग ऑन द पार्टीज. आशुतोष, व्हाट इज इलीगल और इम्प्रॉपर? ऐसा हो सकता है, लेट्स एज्यूम कि डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर दिया एंड वेयर दे आर सेइंग यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द रॉयल्टी ऑन द माइनिंग लीज, लेट्स एज्यूम, बट क्लियरली देयर इज एन सर्कुलर stating that royalty on mining lease is payable at the rate of 18% in the GST under reverse charge. So even after that there is a circular, but still the officer has given the order against that and which is prejudicial to the revenue. And in that case, revisional authority may come into the picture and pass the revision order. That could be a very scenario. I have given only one example. Further to the power of the revision. Power of the revision is subject to the condition that non-appealable order. Section 121 is talking about certain order which are not appealable cannot be revised. मतलब यहां पर क्या है, कुछ एक ऑर्डर जो अपीलेबल नहीं है उनको रिवाइज भी नहीं कर सकते. RA shall not exercise the power of the revision if, मतलब वो अपना पावर एक्सरसाइज नहीं करेगा अगर order has been subject to the appeal before the appellate authority, tribunal, high court, supreme court. Period of 6 months has not yet expired. मतलब 6 month के पहले revision authority will not come into the picture.
or more than 3 years has expired. So maximum time limit to do the revision of any order is 3 years. After passing the decision sought to be revised, or order has already taken for the revision at an earlier stage, or the order sought to be revised is itself a revisional order. 4 कैसे सिचुएशन है? एक पहले मुझे बताओ, 4 आप देख के बताओ कि वो कौन सी 4 सिचुएशन है जब आरए रिविजनल अथॉरिटी विल नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ द रिवीजन, अगर ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू द अपील है, 6 मंथ एक्सपायर नहीं हुआ, 3 ईयर एक्सपायर हो गया, मतलब 6 to 3 मंथ का टाइम लिमिट है। ठीक है, तीसरा क्या है, ऑर्डर अर्लियर कभी रिवाइज हो चुका, और चौथा क्या है, जो रिवीजन करना है वो इटसेल्फ इट इज ए रिवीजन ऑर्डर। तो रिवीजन ऑर्डर का रिवीजन नहीं हो सकता, रिवीजन ऑर्डर का रिवीजन अगेन नहीं हो सकता। कौन से ऑर्डर का रिवीजन नहीं हो सकता? जो सेक्शन 121 में अपीलेबल नहीं है, कैन नॉट बी रिवाइज्ड। और क्या पढ़ा हमने? जब वो एग्जामिन करेगा एंड आरए इज ऑफ द व्यू दैट डिसीजन और ऑर्डर पास बाय द सबऑर्डिनेट टू हिम इज एरोनियस insofar prejudicial to the interest of the revenue, not taken into account material fact, or in consequence of decision or observation by the CAG. RA still pass an order on any point which has not been raised, decided in an appeal before the AA Tribunal, High Court, Supreme Court, before the expiry of the period of 1 year from the date of the order in such appeal, or before the expiry of the period of 3 years from the date of initial order, whichever is later. एक बार वापस रिपीट करता हूं, द ऑर्डर sought to be revised has been subject to the appeal before AA ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक साथ में कहा कि आरए उन ऑर्डर के अगेंस्ट में भी अपना डिसीजन रिविजनली ऑर्डर पास करता है, मैं स्टिल पास एन ऑर्डर ऑन एनी पॉइंट विच हैज नॉट बीन रेज्ड और डिसाइडेड इन द अपील। अपील सभी जगह, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 1 year from the date of the order in such appeal, or before the expiry of the period of 3 years from the date of the initial order। तो 1 साल उस ऑर्डर में जो अपील ऑर्डर है, और 3 साल ओरिजिनल ऑर्डर में जो दोनों में से लेट है, उसके अंदर अंदर वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। Taxpayer is served with an adjudication order on 25 May. RA can revise the order during the period between 26 November, that is after expiry of 6 months, and 25th May, that is 3 years. Another example, ABC Limited, manufacture product P and Q, company avail the benefit of exemption in respect of the product P and pay the tax on the product Q. SCN was issued on the company alleging that product P was not eligible for exemption and product Q was liable to tax at the rate of 18%. Adjudicating authority concluded that in respect of the tax, product Q was correct, but the exemption on the product Q was being availed wrongly. Consequently, an order confirming the demand of 10 lakh passed by the adjudicating authority. Company filed an appeal against the order before the AA on 16 February. The AA passed the order in favor of the company on 31st October. RA can pass the revised order in respect of the rate of the taxes on the product Q before 31st October 25, that is 1 year from the date of the order, or 3 years from the date of adjudication order, whichever is later. Thus, RA can pass the revised order by 15th November 27. वो जो रिवाइज ऑर्डर है, दैट कैन ऑल्सो अगेन गो टू द, अगर आपको लगता है अपील है, अपीलेबल, मतलब दैट इज ऑल्सो अपीलेबल ऑर्डर, एंड इफ यू फील दैट इट इज नॉट करेक्ट, यू आर एग्रीव्ड, देन यू कैन फाइल द अपील। Point to be excluded in computing the limitation period of 3 years. If the decision or order sought to be revised involve an issue on which tribunal, High Court has given the decision in some other proceeding, and an appeal to the High Court or Supreme Court against such decision is pending, so period spent between the date of the decision of the lower authority and date of the decision of the higher authority, क्योंकि वो मैटर अपील में चल रहा है, तो shall be excluded in computing the
लिमिटेशन ऑफ 3 ईयर, जो अभी हमने बात की थी ना, डिविजनरी अथॉरिटी का टाइम लिमिट 3 साल तक का है, तो वो जो जितना टाइम लगेगा दैट विल बी एक्सक्लूडेड when proceeding for the revision has been initiated by way of issuance of the notice under section 108. When the issuance of the revisionary order is stayed by the court tribunal, the period of the such stay shall be excluded in computing the limitation of 3 years. The provision related to the revision empower the superior authority to revise the decision or order passed by the subordinate officer which are found to be improper. Since AA also has the power to annul, enhance, in order to avoid any duplication of the proceeding, an order which are subject to the appeal cannot be revised. इसका लॉजिक समझ में आया ना? जब इन्होंने कहा कि कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आप रिविजनरी एप्लीकेशन, रिविजनल अथॉरिटी डज नॉट हैव द पावर, जो ऑलरेडी अपील में, क्योंकि अपील में भी वही सेम पावर है, तो देयरफॉर दे हैव नॉट एक्सटेंडेड द सेम पावर टू द रिविजनल अथॉरिटी. However, the revisional order can pass on the point that are not raised or decided in the appeal. Accordingly, law provides for extension of the time limit for revising the order that are subject matter of an appeal. Extension to the prescribed limitation also apply where the revision proceeding are stayed. Revision proceeding can only be taken once with respect to an order, and revision order cannot be again revised. अब आपका क्वेश्चन था हेमंत कि रिविजनल अथॉरिटी कौन होती है. देन अगर जो डिसीजन या ऑर्डर पास किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर ने, तो उनके लिए जो रिविजनल अथॉरिटी होंगी वो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर होंगे. अगेन अगर जो पास करने वाला जो डिसीजन है या ऑर्डर है डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट है, तो जो रिविजनल अथॉरिटी है वो कौन होंगे? एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर. ठीक है. अब हम बात करते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल की. कुछ बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में. अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है? 2 बेंच होगी, एक प्रिंसिपल बेंच, एक स्टेट बेंच होगी. Principal bench will heard the matter only with respect to POS and will have the office in the New Delhi only. So principal bench will be situated at New Delhi only. बाकी स्टेट बेंच हर एक स्टेट में होगी. नंबर ऑफ बेंच अगेन अलग अलग बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टैक्स पेयर, उसके हिसाब से जीएसटी काउंसिल विल अप्रूव. और एक कॉन्सेप्ट होता है सर्किट बेंच का. यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट बेंच. ये होता क्या सर्किट बेंच? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द सर्किट बेंच? नो प्रॉब्लम. सर्किट बेंच क्या होता है? जो लेट्स से स्टेट बेंच एज्यूम करता हूं, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकल एज्यूमिंग दैट इन महाराष्ट्र द स्टेट बेंच हैज बीन ओपन एट महाराष्ट्र, मुंबई. ठीक है, बट पुणे में कोई बेंच ओपन नहीं हुई. तो पुणे में क्या है? देयर मे बी द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट बेंच. सर्किट बेंच मतलब जो फुल फ्लेजेड स्टेट बेंच है नियर बाई, लेट्स से महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो वो क्या करेगी? लेट्स से एक वीक में एक दिन पुणे के लिए अलॉकेट कर देगी, इन विच दे विल ट्रेवल टू द पुणे एंड जस्ट वहां पे वो वीक में 15 दिन में, कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई डे फिक्स नहीं है. ठीक है, इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जजेस एंड एटसेट्रा. तो वो क्या करेंगे? दे विल गो एंड सिट इन द पुणे फॉर 1 डे. तो उससे होगा क्या? द पुणे विल गेट द फैसिलिटी ऑफ द स्टेट बेंच इन द सेम मैनर. तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को वहां पे लॉ इतना रेवेन्यू इतना एक्सपेंसेस इनकर नहीं करना पड़ेगा. भाई अगर पूरा स्टेट बेंच बनाना है तो एडमिन डिपार्टमेंट होगा उसका, देयर विल बी द प्रॉपर ऑफिस, एवरीथिंग वुड बी देयर. बट सर्किट बेंच में क्या है? वो ट्रैवल करते रहते हैं नियर बाई लोकेशन में. तो दे आर गिविंग द एडवांटेज टू द टैक्स पेयर कि वहां पे वो आके पर्सनली मैटर सुन सकते हैं. इज दैट क्लियर? एंड एक स्टेट में मल्टीपल स्टेट बेंच हो सकती है. लेट्स से महाराष्ट्र, देयर कैन बी मोर देन 1 स्टेट बेंच. और कई स्टेट ऐसे हैं जिनको कोई स्टेट बेंच अलॉट नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी द ज्वाइंट बेंच ऑल्सो. हाँ, जस्ट लाइक द ब्रांच. नहीं, ब्रांच ऑफिस में तो आप एक प्रॉपर ऑफिस ओपन करते हो. ब्रांच ऑफिस में यू हैव द ऑफिस फॉर द एंटायर मतलब एंटायर पीरियड 24 आवर्स. मतलब वो एक
रनिंग ऑफिस होता है, बट वहां पे वो रनिंग ऑफिस नहीं होगा, वहां पे वो सिर्फ एक दिन के लिए ऑफिस के रूप में काम होगा, एंड देन देयर विल बी नो ऑफिस, अगेन दे विल कम बैक टू देयर मेन लोकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द जीएसटी लॉ सेक्शन 109 to 111, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ appellate tribunal and benches thereof section 109. The government on the recommendation of the council by notification established with effect from such date as may be specified therein appellate tribunal known as GST appellate tribunal for hearing the appeal against the order passed by the appellate authority, revisional authority, or for conducting an examination or adjudicating the cases referred to in section 171. क्या था 171? We have already discussed what is the 171. Anti-profit. Pass on the benefit of reduction in the tax or increase the ITC. तो अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करेंगे? फर्स्ट करेंगे हियरिंग द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द अपीलेट अथॉरिटी, सेकंड करेंगे ऑर्डर पास बाय द रिविजनल अथॉरिटी, और तीसरा करेंगे कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन और एडजुडिकेटिंग द केसेस रेफर टू इन सेक्शन 171 if so notified under that subsection. ठीक है, the jurisdiction, power and authority conferred on the appellate tribunal shall be exercised by the principal bench and state benches. Government by notification constitute the principal bench at New Delhi, which consists of president, judicial member, technical member center and technical member state. See, you all know that the tribunal is not yet fully functional till date, even after 7 years, more than 7 years. अब तो almost 8 years होने वाला है, but still the appellate tribunal is not yet functional. Anybody who knows the reason कि उन्होंने अभी तक tribunal क्यों नहीं बनाया? Anybody who know the reason that why the tribunal has not yet been constituted? The biggest problem was in the law. This section 109 to 111, it has been amended. Earlier, what they were talking about, the composition has been challenged. Composition जो था ना, constitution जो था ना, उसको challenge कर दिया. क्यों challenge किया? Because earlier it was talking about the 1 judicial and 2 technical. मद्रास हाई कोर्ट में ये चैलेंज हुआ था, and thereafter the provision has been kept on hold. तो आपने आशुतोष या आपने हेमंत या किसी ने पूछा था ना कि why there will be the stay, because of this could also be one example. तो उन्होंने कहा ट्रिब्यूनल will not be constituted unless and until, तो जो मैटर वो क्लियर नहीं होता. What was the final changes? Now they are saying there will be the 2 judges and 2 judicial member and 2 technical member. 2 technical member and 2 judicial member. तो अब उन्होंने क्या किया? पहले टेक्निकल मेंबर ज्यादा थे और जुडिशियल मेंबर कम थे. अब इन दोनों को एट पार कर दिया एंड नाउ फाइनली इट हैज बीन अप्रूव्ड. ठीक है. On the request of the state, the government by notification constitute the number of the state benches at such place as may be recommended by the council, which shall consist of 2 judicial member, 1 technical member and 1 technical member, state and center. एक ये कंपोजिशन के बारे में आई थिंक ज्यादा थोड़ी क्विकली आइडिया लग जाएगा. प्रिंसिपल बेंच में क्या होगा? प्रेसिडेंट और जुडिशियल मेंबर, देन टेक्निकल मेंबर सेंटर एंड टेक्निकल मेंबर स्टेट. स्टेट बेंच में क्या होगा? 2 जुडिशियल मेंबर होंगे, 1 टेक्निकल मेंबर सेंटर होगा, 1 टेक्निकल मेंबर स्टेट होगा. जुरिस्डिक्शन. द प्रिंसिपल बेंच इन स्टेट बेंच शैल हियर द अपील against the order passed by the appellate authority or the revisional authority. मैं रिपीट करता हूं. The principal bench and state bench shall hear the appeal against the order passed by the appellate authority or the revisional authority. However, in the cases in which any one of the issue involved relating to the POS, it shall be heard by the principal bench only. ठीक है.
171 जो एंटी प्रॉफिटरिंग है, दैट विल बी adjudicated, examined only by the principal bench. Then government, on the recommendation of the council, notify other cases or class the cases which shall be heard only by the principal bench. So these are the three category of the work which will be allocated to the principal bench. Transfer of the cases. Subject to the 1095, the president shall from time to time by a general order or special order distribute the business of appellate tribunal among the benches and may transfer the case from one bench to the another bench. Senior most judicial member within the state benches shall act as a VP for such state benches and shall exercise such power of the president as may be prescribed, but for all other purpose be considered as member only. तो जो वाइस प्रेसिडेंट है फॉर द स्टेट बेंचेस, ठीक है, shall exercise the power of the president as may be prescribed, but for all the purpose it will be considered as member. सिंगल मेंबर बेंच, ये क्या कॉन्सेप्ट है? कंसिडरिंग द अमाउंट डज नॉट एक्सीड 50 लाख. अपील where the tax or the ITC involved or the amount of the fine fee penalty in any order does not exceed 50 lakh. अपील जहां पे टैक्स या आईटीसी या फाइन फी पेनल्टी डिटरमाइन इन ऑर्डर डज नॉट एक्सीड 50 लाख एंड विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब फैक्ट बेस्ड हियरिंग है, विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, it can be heard by a single member and all other cases shall be heard together by one judicial member and one technical member. Accordingly, the cases can be heard by a bench consisting of single member if all the conditions are satisfied. Amount of tax or ITC or fine fee penalty does not exceed 50 lakh. Matter does not involve question of law. President का prior approval है और other prescribed condition has been satisfied. मेजोरिटी रूल इन केस ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक बार क्विकली मुझे आंसर कर पाएंगे वो कौन सी सिचुएशन है जहां पर रिविजनली अथॉरिटी विल नॉट डू द रिवीजन ऑफ ऑर्डर? हमने 4 सिचुएशन पढ़ी थी वेयर द रिविजनल अथॉरिटी विल नॉट डू द रिवीजन. कोई भी एक या दो सिचुएशन आप मुझे बता सकते हैं? कैन यू टेल मी एनी वन और टू सिचुएशन? एनी वन और टू सिचुएशन? बहुत बढ़िया प्रशांत, I have received one correct answer. बहुत बढ़िया, very very nice हेमंत. Correct प्रशांत, second also is correct. R प्रसाद, yes, दो आपने कारण, दो रीजन बता दिए, both are correct. Yes, आशुतोष एक कारण बताया, absolutely correct. What is the time? कुछ एक टाइम भी बताया था, करेक्ट? इतने टाइम से पहले वो नहीं सुनेंगे, इतने टाइम ऑफ एक्सपायरी के बाद वो नहीं सुनेंगे. व्हाट वाज द टाइम लिमिट? कुछ एक टाइम फ्रेम था, ठीक है ना, इसके पहले नहीं सुनेंगे, इसके बाद नहीं सुनेंगे. करेक्ट. हाँ, इट वाज, यस, ऑल आर करेक्ट. आशुतोष, प्रशांत, आर प्रसाद एंड हेमंत. मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 3 ईयर. 3 ईयर के बाद नहीं सुनेंगे और 6 मंथ के पहले नहीं सुनेंगे. इट इज नॉट 1 ईयर. समवन हैज गिवन द रिप्लाई इज 1 ईयर, तो वहां पे वो 6 मंथ है and maximum time limit is 3 years. Correct. Fine. Okay. Let's move further. Majority rule in case of the difference of opinion, if after hearing the case, no problem beta. If after hearing the case, member differ in their opinion on any point, such member shall state the point or points on which they differ and the president shall refer such case for hearing. Where the appeal was originally heard by the member of the state bench, तो वो क्या करेंगे? They can transfer the case to the another member of the state bench within the same state. और अगर उस स्टेट में कोई स्टेट बेंच ही नहीं है, then to member of the state bench in another state. Majority rule in case of the difference of opinion. अगर opinion difference है तो point note down करने के बाद में it will be referred to the president and president can transfer the case within the state to the another state bench, और अगर कोई और स्टेट बेंच नहीं तो कुछ दूसरे स्टेट के स्टेट बेंच को भी ट्रांसफर कर सकते हैं. Where the appeal was originally heard by the member of the state bench, और एंड यहाँ पे क्या बोला? Where the
appeal was originally heard by the member of the principal bench to another member from the principal bench, or where no such other member is available to the member of state bench also. तो वो स्टेट बेंच के मेंबर को भी ट्रांसफर कर सकते हैं. बाय दिस यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज नॉट लाइक वन इज सुपीरियर एंड वन इज लोअर. नो, इन द लॉ इट इज नॉट लाइक स्टेट बेंच के पास पावर कम है या लोअर अथॉरिटी है और प्रिंसिपल बेंच हायर अथॉरिटी है तो स्टेट बेंच के डिसीजन प्रिंसिपल बेंच के पास जाएंगे. ऐसा नहीं है. आई डू अग्री दैट देयर इज वन डिफरेंस. द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ state bench will goes to the high court, then supreme court, but order against the principal bench will directly lies with the supreme court. Such points shall be decided according to the majority opinion, including the opinion of the member who first heard the case. Okay. Government, in consultation with the president for the administrative efficiency, transferred the member from one bench to the another bench. लेकिन उन्होंने क्या restriction कर दिया, एक स्टेट बेंच का जो मेंबर है, टेक्निकल मेंबर, कैन बी ट्रांसफर्ड टू स्टेट बेंच ओनली ऑफ द सेम स्टेट. नहीं तो होगा क्या, एवरीवन विल लुक टू द अनदर स्टेट. मान लो मैं सपोज करो मेरा स्टेट बेंच है राजस्थान, आई विल ट्राई टू लुक टू द अनदर स्टेट जहां मेरा होम टाउन है. तो उन्होंने क्या कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए ट्रांसफर इज पॉसिबल, नो प्रॉब्लम, बट टेक्निकल मेंबर ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द अनदर स्टेट जिसमें उसका ओरिजिनल अपॉइंटमेंट हुआ है. ठीक है. Defect in proceeding not to render the proceeding invalid. No act or proceeding of the tribunal shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in constitution. हाँ, section 1110 I think not discussed. The president, member, their qualification, appointment, condition of service shall be in the manner prescribed in the 110 of the CGSTA. मतलब वो कितने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होगा, कितना वो ग्रेड ए के ऑफिसर होंगे, गस्टेड ऑफिसर होंगे, क्या होंगे, कितना नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, व्हाट वुड बी इन द केस ऑफ judicial member, what would be in the case of technical member. So everything has been explained in the 1110, which is not in the part of your syllabus. It appears. Procedure before appellate tribunal. Now the appellate tribunal shall not be bound by the procedure laid down in the CPC, Code of Civil Procedure. However, it shall be guided by the principle of natural justice and shall have the power to regulate its own process. Pehla point. The appellate tribunal shall have the same power as are vested in the civil court under the CPC while trying the suit in respect of the following matter. किसी को समन करें and enforcing the attendance of any person and examining on oath, requiring the discovery and production of the document, requiring evidence on affidavit subject to the provision of 123 and 124 of Indian Evidence Act, requiring any public record or document or copy of such record or document from any office, issuing commission for the examination of the witness or document, dismissing the representation for the default or deciding ex parte, setting aside any order of the dismissal of any representation for the default or an order passed by ex parte, any other matter which may be prescribed. उसके बाद में क्या बोलते हैं, order of the tribunal may be enforced in the same manner as it is a decree made by the court. The tribunal can send for execution of its order to the court within its local limit of whose jurisdiction. अगर ऑर्डर कंपनी के अगेंस्ट में है तो जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, और अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में है तो जहां पे वो वॉलंटरली रिसाइड करता है या बिजनेस कैरी ऑन करता है या पर्सनली वर्क करता है फॉर गेन. Then all proceeding before the tribunal shall be deemed to be the judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 of the IPC. मतलब क्या हुआ, अगर इस ऑर्डर का
कंप्लायंस नहीं किया तो इट विल बी द ऑफेंस अंडर आईपीसी। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी द सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, नाउ अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। नहीं नहीं, वो दिस इज एन अमेंडमेंट सर, नो प्रोसीडिंग। नहीं नहीं, देख कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज हुआ था तो उसके बाद तो उन्होंने चेंज किया प्रोविजन। ठीक है, एंड फाइनली लेटर ऑन अगर कोई मेंबर नहीं है या कुछ और नहीं है तो उसके कारण वो प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगी। ये आई थिंक पहले भी था, ये प्रोविजन पहले भी था। इट वाज नॉट लाइक इट वाज एडेड नाउ। What are the issuing commission for witness? Is it like a summon? Issuing commission. Yes. In my view also, issuing commission for the examination of the witness. Correct. मतलब दे वो ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई आप इसके विटनेस को एग्जामिन करो। सो अपील टू द ट्रिब्यूनल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर। Aggrieved person taxpayer can any person aggrieved by the order by the appellate authority or revisional authority may file the appeal to the appellate tribunal. कितना टाइम लिमिट है? 3 month from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person. ठीक है, द ट्रिब्यूनल कैन कंडोन द डिले। यहां पर डिले कंडोनेशन का टाइम लिमिट कितना है? विद इन 3 month। तो 3+3 है। एज पर द सीजीएसटी ऑर्डर 2019 द 3 month का स्टार्ट पीरियड कहां पे कैन काउंट होगा? शैल बी कंसिडर्ड एज पर द लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर or the date on which the president or state president, as the case may be, the tribunal after its constitution under section 109 enter into the office. ठीक है, what would be the form for filing the appeal? What would be the form for filing the appeal? An appeal to the tribunal shall be filed in the APL 05 along with the relevant document electronically, and provisional acknowledgement shall be issued immediately. Appeal to the tribunal may be filed manually if the registrar allow the same by issuing a special or general order, subject to the condition and restriction as may be specified, and in case the provision acknowledgement shall be issued immediately. Power of the tribunal to refuse to admit an appeal. ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं, किसी अपील को एडमिट करने से मना कर सकते हैं अगर टैक्स या आईटीसी कितना है? नॉट एक्सीडिंग 50,000। Just now we have also discussed something about 50 lakh. तो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं ना, रजिस्ट्रार तो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। देयर विल बी द हायरार्की ऑफ एवरी ट्रिब्यूनल, देयर विल बी वन रजिस्ट्रार अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन जो भी उनका है, तो दैट विल बी अपॉइंटेड और वो डिसाइड करेंगे। तो उनकी अपनी कुछ क्वालिफिकेशन होगी, कुछ क्राइटेरिया होगा, आई डोंट नो। We have also discussed that 50 lakh something 50 lakh. Can you tell me what was with respect to 50 lakh? कुछ था एक। At one point we have discussed the 50 lakh relating some provision which was talking about the 50 lakh. अगर exceed नहीं करता 50 lakh तो ये हो सकता है। What was the point? It can be heard by a single bench. कोई केस सिंगल बेंच कब हर्ड कर सकता है? अगर 50 लाख से एक्सीड नहीं करता। और क्या पॉइंट था? When any matter can be heard by the single member if it is not exceeding 50 lakh and it is question of law, it does not involve the question of law. और जो भी कंडीशन दी गई है दैट कंडीशन हैज बीन सैटिस्फाइड एंड परमिशन विद द प्रेसिडेंट। करेक्ट। तो 4 कंडीशन अगर सैटिस्फाइड हो जाती है देन
the particular matter can be heard by the single member also. Prior approval of the president, absolutely correct. ठीक है, अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन. क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है? क्रॉस ऑब्जेक्शन, लेट्स से अपील मैंने फाइल की है, ठीक है, तो जो काउंटर पार्टी है उसे कहेंगे कि भाई ये अपील मेरे पास में आई है, आपके जो ऑब्जेक्शन है, जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है, काइंडली सबमिट द सेम. इसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन. द लॉ प्रोवाइड टू फाइलिंग द क्रॉस ऑब्जेक्शन बाय द रेस्पोंडेंट अगेंस्ट such part of the order which the respondent may initially not have chosen to file the appeal. मतलब अगर एक एप्लीकेंट होगा, एक रेस्पोंडेंट होगा, तो जो रेस्पोंडेंट है जिसने अपील फाइल नहीं की है, then the tribunal will give the opportunity to file the cross objection. It provide that on receipt of the notice, appeal has been filed, the party against whom the appeal has been preferred, notwithstanding that he may not have appealed against that order, एंड कितना टाइम में क्रॉस मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना है? इट विल बी द 45 days अगेंस्ट एनी पार्ट ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट ऑन, एंड सच मेमोरेंडम शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द ट्रिब्यूनल as it is an appeal presented within the time limit specified for filing the initial appeal. Tribunal can condone the delay, again 45 plus 45. Fee for filing the appeal कितना है? The fees for filing the appeal shall be 1,000 for every 1 lakh of tax or ITC involved, or the difference in tax or ITC involved, or the amount of the fine, fee or penalty in that order. However, the fee shall not exceed 25,000 and a minimum of 5,000. Fee for filing the appeal in respect of an order not involving any demand, tax, interest, penalty, fee, fine shall be 5,000 only. ठीक है. There shall be no fee for the application made before the tribunal for rectification of error. Mandatory pre-deposit, again that we will discuss in some time. Department, yes, कमिश्नर अपनी इच्छा से या अदर स्टेट या यूटी के कमिश्नर की रिक्वेस्ट पर they can examine the record passed by the appellate authority या revisional authority, and then क्या पर्पस के लिए वो एग्जामिन करेंगे? सेम, टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ द लीगलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑर्डर. अगर उनको लगता है कमिश्नर में बाय ऑर्डर डायरेक्ट एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच सच ऑर्डर हैज बीन पास्ड, देन एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन, तो 6 months के अंदर अंदर वो ट्रिब्यूनल को अपील फाइल कर सकते हैं. बट अगेन सेम सीजीएसटी ऑर्डर 2019, 6 month का पीरियड कब काउंट होगा? द डेट ऑफ ऑर्डर या डेट ऑन विच प्रेसिडेंट एंटर इनटू द ऑफिस. यहां पे भी वही बात है. द एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल shall be filed in the APL 07 along with relevant document and that to be electronically, and जिस दिन वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे immediately provisional acknowledgement will be issued immediately. अगर वो एप्लीकेशन मैन्युअली फाइल हुआ है, कब? जब रजिस्ट्रार मुझे अलाउ करता, सेम issuing a special or general order to that effect, subject to such condition restriction. In such case, again the provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately. Such application shall be dealt with the appellate tribunal as if it is an appeal made by as it is an appeal made against the order of appellate authority या tribunal या revisional authority. There is no requirement to making the pre-deposit in the case of the department appeal. ठीक है. Common provision in respect of या in cases of appeal by the aggrieved person and the department appeal. A memorandum of the cross objection. What is the time limit to submit the memorandum of cross objection? हमने अभी डिस्कस किया था ना. What is the time limit to submit the memorandum of cross objection? $45 days. 45 days. And what is the condonation? कितना दिन तक मैक्सिमम कंडोन कर सकते हैं वो? What is the maximum time limit of condonation? Same, 45 days.
time limit to file the appeal by the aggrieved person, that taxpayer, to the appellate tribunal. क्या टाइम लिमिट है अपील फाइल करने का बाय द एग्रीव्ड पर्सन टू द appellate ट्रिब्यूनल? कितना टाइम लिमिट है एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ कंडोनेशन? दोनों बताइए, कितना टाइम लिमिट है टू फाइल द अपील एंड मुझे ये बताइए कितना टाइम लिमिट है कंडोनेशन का? 3+3, 3+3। यहां पे कंडोनेशन 1 मंथ नहीं, यहां पे कंडोनेशन 3 मंथ है और डिपार्टमेंट विल फाइल द अपील विद इन 6 मंथ। इन व्हेन मतलब व्हेन द अपील टू द ट्रिब्यूनल कैन बी ऑफलाइन, कैन बी मैनुअली। ट्रिब्यूनल की अपील मैनुअली कब हो सकती है? व्हेन द अपील टू द ट्रिब्यूनल कैन बी मैनुअली। करेक्ट, जब रजिस्ट्रार हमें अलाउ करे बाय ए स्पेशल और जनरल ऑर्डर। व्हेन द रजिस्ट्रार विल अलाउ बाय ए स्पेशल और जनरल ऑर्डर। क्विकली टेल मी, द ट्रिब्यूनल किसी भी केस को रिफ्यूज कर सकते हैं एडमिट करने के लिए इफ द अमाउंट डज नॉट एक्सीड। If the amount does not exceed 50,000, absolutely correct. 50,000, absolutely correct. What is the fees of the tribunal? एक स्लैब कुछ हमने पढ़ा था कि इतनी फीस होगी मिनिमम मैक्सिमम, और पर 1 लाख रुपए जितना फीस होगा, कुछ भी नहीं होगा तो इतना फीस होगा, कुछ केस में कोई भी फीस चार्ज नहीं होगा। एक या दो पॉइंट आप बता सकते हैं, व्हाट वुड बी द फीस ऑफ ट्रिब्यूनल? फीस के रिगार्ड में हमने मल्टीपल प्रोविजन डिस्कस किए थे, 2-3 पॉइंट हमने बात की थी, तो 2-3 पॉइंट क्या क्या है? फॉर रुपीज 1 लाख इट इज 1,000, ओके। सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ एंड सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ कितना था? मिनिमम कितना था, मैक्सिमम कितना था? 25,000 रुपए मैक्सिमम था, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रशांत, हेमंत, आर प्रसाद, आशुतोष, एवरीवन इज करेक्ट। मिनिमम मैक्सिमम, किस केस में कोई फीस चार्ज नहीं होगा? इन विच केस द फीस विल नॉट बी चार्ज्ड? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं होगा, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। एंड fees for filing the appeal in respect of an order not involving any demand of tax, interest, fine, fees और penalty, ये कितना होगा? ये 5,000 रुपए होगा। फीस फॉर फाइलिंग दी अपील, ये बात हम पढ़ चुके हैं, देयर नो फीस अगर वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए मेमोरेंडम ऑफ द क्रॉस ऑब्जेक्शन टू द ट्रिब्यूनल, मेमोरेंडम ऑफ द क्रॉस ऑब्जेक्शन टू द ट्रिब्यूनल shall be filed electronically in APL 06. However, the memorandum of the cross objection may be filed manually only if the registrar allow the same by issuing the general special order. किस तारीख को माना जाएगा अपील? अगर जो ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में आप अपील कर रहे हैं दैट इज अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल, तो फाइनल एक्नॉलेजमेंट इंडिकेटिंग द अपील नंबर shall be issued APL 02 on removal of the defect if any, and date of issue the provisional acknowledgement shall be considered the date of the appeal. अगर कोई ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज नॉट अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल, तो विद इन 7 days सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी हैज टू बी सबमिटेड, अगर वो फाइनल एक्नॉलेजमेंट इश्यू कर दिया जाएगा। अगर सेल्फ सर्टिफाइड इज नॉट सबमिटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days, तो क्या होगा? द डेट व्हेन दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन सबमिटेड will be considered as the date of the filing of the document. The appeal
shall be treated as filed only when the final acknowledgement indicating the appeal number is issued. Appeal and memorandum of cross objection shall be signed in the prescribed manner. Registrar shall mean the registrar appointed by the government for the purpose and shall include the joint registrar, deputy registrar, and assistant registrar. Order of the tribunal. Again, the tribunal, after hearing both the sides, may pass an order confirming the demand, modifying the demand, annulling the demand, the decision or order, or refer the case back to the AA or RA or to the original adjudicating authority within such direction for fresh adjudication or decision after taking additional evidence if necessary. Tell me at which level of appellate mechanism the matter cannot be referred back. हमने किस लेवल में ये डिस्कस किया कि मैटर कैन नॉट बी रेफर्ड बैक. दे हैव टू डिसाइड द ऑर्डर, they have to decide confirm the demand, modify the demand, या annulling the demand. It is first level of appeal, that is appellate authority. ठीक है. Tribunal may, if sufficient cause is shown, grant up to 3 adjournment. Law provide an advisory time limit of 1 year. Tribunal send a copy of the order to the AA appellate authority, revisional authority, and original adjudicating authority, appellant and jurisdictional commissioner, or the CGST, SGST, UTGST commissioner. Every order shall be final and binding on the parties unless the dispute is taken to the higher forum. What is the rectification of error? Tribunal can correct its own order for any apparent mistake, but it has no power to review. The tribunal may amend any order passed by it so as to rectify any error apparent on the face of the record. If such error is noticed in the order by its own or is brought to the notice by the commissioner or the other party to the appeal within a period of 3 months from the date of the order. अगर कोई ऐसा एरर है फेस पर जो अपीयर हो रहा है, अगर 3 मंथ में उनको नोटिस में ला दिया जाता है, देन दे विल हैव द पावर टू रेक्टिफाई द एरर. नो अमेंडमेंट shall have the effect of enhancing the assessment or reducing the refund or ITC unless the opportunity of the being heard has been given. Withdrawal of the appeal. We have also discussed that yes, appeal can be withdrawn. सेम जैसे हमने APL 1 या APL 3 के बारे में बात की थी, यहाँ पे APL 5 या APL 7 को भी विड्रॉ किया जा सकता है. Appellant may at any time before issuance of the order in APL 0 in respect of an appeal in file in APL 05 or an application filed in APL 07, मतलब department file an application for withdrawal of the said appeal application by filing the application in the form of 0W, APL 05W या APL 07W, where the final acknowledgement has been issued. The withdrawal would be subject to the approval of the tribunal within 15 days. Fresh appeal shall be filed within the time limit specified in A or B above. एकदम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था A और B. अब हम बात करते हैं मैंडेटरी पे डिपॉजिट की. जस्ट अगेन टेक 5 or 7 मिनट का ब्रेक. We'll resume at 7 towards we'll resume at after 5 minutes and then we'll start with the mandatory pre-deposit. अशोक जी एक बार 5 मिनट का ब्रेक स्टार्ट कर दीजिए.
pre-deposit. The right to appeal is the statutory right which operates within the limitation placed on it by the law. One such limitation that is generally applied the principle of the tax statute is that appellant must pre-deposit. What is the pre-deposit amount? An appeal may succeed in his appeal. Appellant may succeed in his appeal. Hence, it would be unfair to saddle him with the financial burden. To balance this factor, the law generally mandates the pre-deposit. 107 subsection 6 provide that no appeal shall be filed before the appellate authority unless the appellant has paid. इसका मतलब क्या हुआ? अगर appellant ने पे नहीं किया and he has filed the appeal, that will not be considered as filing of appeal. Because 1076 clearly saying कि आप अपील कर ही नहीं सकते जब तक आपने प्री डिपॉजिट नहीं किया. प्री डिपॉजिट कितना? Full amount of the tax, interest, fine, fee, penalty arising from the impugned order and which is admitted by him, then a sum equal to the 10% of the remaining amount of the tax in dispute arising from the impugned order in relation to which the appeal has been filed subject to maximum of 25 crore and 50 crore in case of IGST. ठीक है, एक बार बात एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से द डिमांड वाज फॉर 1 crore, टैक्स and then interest, then penalty. Out of rupees 1 crore, you feel that the 10 lakh rupees is admitted because the 10 lakh was the default of the client. You are agreeing to this 10 lakh. But 90 lakh, you are not agreeing. You are saying that yes, मैं इसके against में appeal file करना चाहता हूं for your client. Then जितना आपने admit किया है, the part which you have admitted, ये आपको पूरा जमा करवाना पड़ेगा full. Tax, interest, penalty, fee plus the sum equal to 10%. Remaining कितना? 90 लाख. तो उसका 10% that is 9 लाख रुपए आपको और जमा करवाना पड़ेगा. इसका मतलब क्या? 10 plus 9, 19 लाख प्लस जो 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट था, पेनल्टी थी, फीस थी, वो. Subject to the maximum of this, yes, this amount has been further relaxed. That is further amendment you will find in the that is not applicable for your batch, but yes, there was some amendment with respect to upper cap. ठीक है. However, no appeal shall be filed against an order under section 109 subsection 3. Can you tell me 129 क्या था? Not 109. 129 क्या चीज का था? What was the section 129? (129) क्या चीज का सेक्शन था? Yes, it was search seizure. नहीं. It was during, see, if e-way bill is not being carried during the movement of the goods and conveyance has been seized, detained. So that was a detention of the goods, seizure of the goods. उस केस में अगर आप पेनल्टी जमा करवाना चाहते हो, then 25% of the penalty has been paid by the applicant. क्योंकि वहां पे तो कुछ टैक्स ही नहीं है ना. इन द सेक्शन 129 इज देयर एनी टैक्स? नो. वहां पे तो सिर्फ पेनल्टी है. पेनल्टी नॉर्मल केस में कितना है? 200% ऑफ टैक्स. जितना भी टैक्स लेवी उसका 200% पेनल्टी है. उस पेनल्टी का 25%, 25% has to be deposited, then only you can file the appeal. The payment of pre-deposit ensure the staying the recovery proceeding for the balance amount of the demand and dispute. Very important. It means the demand for your client was 1 crore, out of which you have paid 10 lakh full
and 9 lakh being 10%. तो जैसे आपने पेमेंट किया, द बैलेंस जो भी आउटस्टैंडिंग है, द बैलेंस जो भी आउटस्टैंडिंग है वो स्टे हो जाएगी, रिकवरी पार्ट रिकवरी नहीं होगा टिल द टाइम जो अपील कंक्लूड नहीं होती है। तो this ABC Limited received the so-called notice determining the tax amount of rupees 10 lakh, penalty 10 lakh, and interest 2 lakh. Adjudicating authority passed the order confirming the entire demand, while ABC Private Limited admitted the tax of rupees 5 lakh and interest of 50,000, and it wishes to file an appeal to litigate the balance amount. Please calculate and tell me what would be the pre-deposit. Please calculate and tell me what would be the pre-deposit. In this case, कितना pre-deposit होगा? How much amount of the pre-deposit is required? कितना अमाउंट फुल था, कितना एक्सेप्ट किया उन्होंने? 5 लाख, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना था? 50,000। सो वो तो पूरा जमा करवाना पड़ेगा 550, एंड देन बैलेंस कितना था उसका 10%। टोटल डिमांड कितनी थी? 10 लाख की। 10 लाख की जिसमें से 5 लाख एक्सेप्ट किया, बैलेंस कितना बचा? 5 लाख, और 5 लाख का 10% कितना? 50,000। वेदर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्री डिपॉजिट? I'm talking about disputed part के केस में 10% would be for the tax component or 10% would be for the tax, interest, penalty, all the component. Only tax. So यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल आंसर करेक्ट है। तो 5 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपए, he has to pay 550 because he is admitted part, and then 10% जो 5 लाख है उसका 10% 50,000, the total pre deposit would be 6 lakhs. ठीक है। ABC Limited received the so-called notice demanding IGST of 600 crore, penalty 100 crore, interest 10 crore. ठीक है। The adjudicating authority passed the order confirming the entire demand, while ABC admitted the liability, penalty and interest of 50 crore, 10 crore and 1 crore respectively. It wishes to file an appeal to litigate the balance amount. Please calculate the pre-deposit. Again, requesting you to calculate the pre-deposit. 600 करोड़ की डिमांड थी, जिसमें 100 करोड़ पेनल्टी ऑफ 100 करोड़ एंड 10 करोड़ इंटरेस्ट है। एबीसी लिमिटेड एडमिटेड द लाइबिलिटी, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ 50 करोड़, 10 करोड़ एंड 1 करोड़। फाइल अपील करना चाहते बैलेंस पार्ट के लिए, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ द प्री डिपॉजिट? कितना प्री डिपॉजिट होगी? प्लीज टेल मी एंड प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी द अमाउंट, कितना प्री डिपॉजिट होगा? एडमिटेड पार्ट फुल, एडमिटेड पार्ट फुल, दैट इज 50 करोड़ टैक्स लाइबिलिटी है, 10 करोड़ इंटरेस्ट और 1 करोड़ पेनल्टी, पेनल्टी 10 करोड़ एंड 1 करोड़ इंटरेस्ट। सो 50,000 61 करोड़, राइट? एंड 61 crore accepted,
एंड द एडमिटेड पार्ट कितना वो निकाल लिया हमने. व्हाट इज द बैलेंस पार्ट 550 करोड़. टोटल डिमांड कितनी थी 600 करोड़ की. टोटल डिमांड कितनी थी? टोटल डिमांड वाज 600 करोड़. तो 600 करोड़ में कितना एक्सेप्ट हुआ? 50 करोड़. तो बैलेंस कितना बचा? 550. 550 का 10% कितना? 550 का 10% कितना? 55. एक और ऊपर जाइए. इज देयर एनी अपर कैप? इज देयर एनी अपर कैप फॉर डिस्प्यूटेड पार्ट? 10% सब्जेक्ट टू द अपर कैप ऑफ 50 करोड़. अगर आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी है तो 25 करोड़. तो यहां पे वैसे अगर मैं 10% निकालता हूं, अगर मैं 10% निकालता हूं, सी 25 करोड़, प्लीज नोट 25 करोड़ और 50 करोड़ is not for the entire pre-deposit. Upper cap is not for the entire pre-deposit. Upper cap is only for this 10%. जितना आपने एक्सेप्ट किया है वो तो आपको पे करना ही होगा. एडिशनली 10% सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 50 करोड़. तो अभी क्या हुआ? 61 करोड़ एडमिटेड हो गया और वैसे 55 करोड़ होता है, बट अपर कैप कितनी? 50 करोड़ की. तो ही हैज टू डिपॉजिट 50 प्लस 61, दैट इज 111 करोड़. आई होप इट इज क्लियर. अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली आस्क. आई होप इट इज क्लियर. अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कंफर्म. ठीक है, आगे बढ़े. अब सेक्शन 112 सबसेक्शन 8 says that appeal to the tribunal would also require the pre-deposit. अभी हमने बात की फर्स्ट लेवल ऑफ अपील की. फर्स्ट लेवल ऑफ अपील की. अब हम बात करते हैं सेकंड अपील की. सेकंड अपील की दैट इज ट्रिब्यूनल. तो ट्रिब्यूनल के केस में कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? यू नीड टू डिपॉजिट द फुल अमाउंट ऑफ एडमिटेड पार्ट एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग इन डिस्प्यूट, and that will be over and above of 10%. That will be over and above of 10%. In addition to the amount deposited before appellate authority arising from the said order subject to the maximum of 50 crore and 100 crore. ठीक है. Where the appeal has been where the appeal has been filed with a pre-deposit, तो क्या हुआ? Recovery proceeding would be stay for the balance part. It is important to note that if any person files an appeal, the recovery proceeding for the balance amount is deemed to be stayed till the disposal of the appeal. However, as the taxpayer were not able to file the appeal under section 112 in the appellate tribunal, क्यों अपील नहीं कर सकता? Why the appellate tribunal की अपील नहीं फाइल हो सकती? Can anybody tell me why the appeal cannot be filed for the appellate tribunal? क्योंकि अभी तक ऑपरेशन में नहीं है. It is not yet functional. It is not yet functional. Therefore, अपीलेट ट्रिब्यूनल तो होगा नहीं. तो अब सोचिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट अपील हैज गिवन द ऑर्डर. ठीक है. वट एवर द टाइम लिमिट इज देयर, 3 मंथ है, वो वेट करेंगे. क्या 3 मंथ के बाद रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी? बिकॉज 112 सबसेक्शन 8 से अगर आपने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर दी तो आपकी बैलेंस डिमांड वुड बी स्टे. इट विल नॉट बी रिकवर्ड. बट अभी तो अपील में ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल में तो अपील फाइल ही नहीं हो रही. वी आर नॉट एबल टू फाइल द अपील बिकॉज अभी तक फंक्शनल नहीं है. देन क्या जो मेरा डिमांड है अराइजिंग आउट ऑफ द फर्स्ट अपील, क्या उसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी? फॉर विच दे आर गिविंग द क्लैरिफिकेशन. However, the taxpayer was not able to file the appeal in the tribunal against the order of the first appellate authority, therefore not able to make the pre-deposit. For this purpose, it has been clarified by Circular 224 dated 11th July. The taxpayer can make the payment of the amount equal to the pre-deposit by navigating the services, leisure and payment toward the demand,
from its dashboard on the GST portal. The said amount deposited by the taxpayer will be adjusted against the amount of the pre-deposit required to be deposited at the time of filing the appeal before the tribunal. तो उन्होंने क्या कहा कि आपका जितना भी एडिशनल डिपॉजिट लाइबिलिटी बनती है आपको प्री डिपॉजिट करवा के रखना होगा, एंड जब भी जो डिपॉजिट आपने किया है ये एडजस्ट हो जाएगा at the time of filing the appeal before the appellate tribunal. And once you deposit this amount, recovery of the remaining amount will be stay as per the order of appellate authority. क्लियर है ना? मैं एक बार वापस क्रक्स में क्लियर करता हूं. appellate authority का ऑर्डर है and you are aggrieved and decided to file the appeal. टाइम लिमिट कितना है? 3 months और date on which this president will enter into the office, whichever is later. ठीक है, तो वो टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए यू आर हैविंग द सफिशिएंट टाइम टू फाइल द अपील. बट पैरेलली अगर आप ये सेक्शन 112(8) देखते हैं, इट सेज दैट अगर आपने अपील फाइल कर दी विद द प्री डिपॉजिट अमाउंट, देन द बैलेंस डिमांड आउटस्टैंडिंग विल बी डीम्ड टू बी स्टे. बट आपने तो अपील फाइल कर ही नहीं सकते अभी. देयरफॉर हाउ दिस डिमांड वुड बी स्टे? सर्कुलर 224 has been issued by the CBIC and saying that please deposit the pre-deposit amount. Please make the payment of pre-deposit by navigating this ledger. अगर टाइम परमिट करेगा, I will log into the GST portal and then I will show you that how this would be look like. ठीक है, जैसे ये डिपॉजिट आप करेंगे तो आपकी जो बैलेंस स्टे, दो फायदे. जो बैलेंस स्टे वो रिकवरी नहीं होगी, बैलेंस आउटस्टैंडिंग है दैट विल बी स्टे एंड रिकवरी नहीं होगी. सेकंड बेनिफिट वुड बी whenever you are filing the appellate to the tribunal, तो जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया it will be adjusted. Taxpayer also need to file an undertaking, additional burden or additional requirement that taxpayer has to give the declaration with the jurisdictional officer. That he will file the appeal against the order of the authority before the tribunal as and when it comes into operation within the prescribed timelines. On providing the said undertaking and on payment of amount equal to pre-deposit, the recovery of the remaining amount will be stay. If any taxpayer has already paid the full amount that was intended to have been paid toward a demand, though through prescribed form, in such case the said person can file the application electronically to adjust the payment made toward the said amount. एक बार वापस रिपीट करता हूं. If a taxpayer has already paid the full amount that was intended to have been paid toward the demand through the prescribed form, that is DRC 03, in such case the said person can file an application electronically on the common portal to adjust the payment made toward the said demand. Till the time such functionality is made available, they were talking about DRC 03 capital A, जो आपने पेमेंट किया DRC 03 में, और जो आपकी डिमांड है, अगर आपने उस डिमांड को सेलेक्ट करते हुए पे नहीं किया, ओपन आपने पेमेंट कर दिया, तो इसका लिंकिंग कैसे होगा? इसका लिंकिंग होगा एक नई फंक्शनलिटी दे हैव डेवलप्ड व्हिच इज नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम, बट फॉर प्रैक्टिकली आई एम सेइंग दे हैव डेवलप्ड दिस लिंकिंग थ्रू DRC 03 कैपिटल A. Till the time such functionality is made available, the concerned taxpayer may initiate the proper officer about the same and officer may not insist any recovery. ठीक है, अब एक बार आते हैं प्री डिपॉजिट में. अगर एडवांस फर्स्ट अपील है तो 10% ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़, एंड अगर वो IGST है तो 10% ऑफ IGST सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 50 करोड़. ठीक है, देन अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल है तो ये 10-20 हो जाएगा, 25-50 हो जाएगा. सिमिलरली 10-20 हो जाएगा, 50-100 हो जाएगा. बट प्लीज नोट this 20% is over and above 10%. यहाँ पे कुछ relaxation है, that is not applicable for your exam. Equivalent amount of SGST is also required to be deposited. Thereafter,
Therefore, whether the appeal involves C or S or I, in both the cases, aggregate amount of the tax which is to be pre-deposited will always be same. For example, appeal before appellate authority involved intrastate supply. Maximum amount of the pre-deposit would be 25C, 25S, so total 50. अगर अपील IGST की होती तब भी 50 होती. Let's read one example. ABC Private Limited received an adjudication order demanding CGST and SGST of 200 crore each. ABC filed the appeal to the appellate authority contesting the entire demand. Amount of the pre-deposit made by the company, because पूरा demand disputed है, तो 200 का 10% 20 करोड़, ठीक है. Equivalent amount of SGST, so the total 40 crore has been paid by the company as the pre-deposit. Appellate authority heard the appeal, decided in favor of the department, confirming the entire amount. Now the company filed the appeal to the tribunal. Amount of the pre-deposit additional 20%, तो 40 crore और जमा करवाना पड़ेगा. 200 crore का 20%, 40 crore. Equivalent amount of SGST 40 plus 40 total 80 जमा करवाना पड़ेगा to file the appeal to the tribunal. ABC Private, second example, ABC Private Limited filed an appeal with the tribunal against an order of the AA demanding IGST of 1200 crore. The company admit the liability of 100 but wish to litigate the balance amount. तो कितना accepted amount है? 100 crore. वो तो आपको पूरा जमा करवाना पड़ेगा. You have to deposit the entire amount. And balance कितना? 1100 crore. 11 का 20% कितना हुआ? 220. Subject to the maximum of 100 crore as of now. I am again and again saying there may be some changes in the law which is not applicable for this exam. Therefore, it has not been discussed. Total pre-deposit is to be made by the company before filing the appeal in the tribunal is 100 crore plus जो भी आपका admitted liability 100, तो 200 crore जमा करवाना पड़ेगा. Interest on refund of pre-deposit. The pre-deposit made by the appellant before appellate authority or the tribunal is required to be refunded consequent to any order of the tribunal or the appellate authority, as the case may be. Interest shall be payable under section 56 from the date of the payment of the amount till the date of the refund. So 56 में we have already discussed this refund ka percentage. 6 and 9% was the interest. Production of additional evidence before the appellate authority or before the appellate tribunal. ठीक है. Rule 11 says that appellant shall not be allowed to produce before appellate authority or tribunal any evidence, whether oral or documentary, other than the evidence produced by him during the course of the proceeding. तो जो आपने रिकॉर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग प्रोड्यूस किए हैं बिफोर द अथॉरिटी, एडजुकेटिंग अथॉरिटी और एज द केस में अपीलेट अथॉरिटी, उसके अलावा आप कोई और एडिशनल ग्राउंड नहीं दे सकते. एक्सेप्शन क्या है? हाउएवर द रूल प्रोवाइड द एक्सेप्शन. एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? वेयर द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस कुड बी अलाउड. पहला, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एज द केस में बी द अपीलेट अथॉरिटी has refused to admit the evidence which ought to have been admitted. तो उन्होंने evidence admit ही नहीं किया. Where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence which he was called upon to produce by the adjudicating authority. Third है, where the appellant was prevented before the adjudicating authority any evidence which is relevant to additional any ground of appeal. तो एक मतलब उसके पास में क्या था? Where the adjudicating authority refused to admit. दूसरा, appellate was prevented which he was called upon to produce the additional record. तीसरा था, appellate was prevented क्या चीज के लिए? Any evidence which is relevant for ground of the appeal. Where the adjudicating authority or as the case may be the appellate authority has made the order appealed against without giving sufficient opportunity to the appellant to adduce evidence relevant to any ground of appeal. No additional evidence shall be admitted unless the appellate authority or tribunal
records in writing the reason for its admission. No additional evidence shall be admitted unless the appellate authority tribunal record in writing the reason of its admission. The appellate authority or tribunal shall not take any additional evidence unless the adjudicating authority or any officer authorized in this behalf has been allowed a reasonable opportunity. क्या चीज का reasonable opportunity? To examine the evidence or the document or to cross-examining the witness produced by the applicant and to produce the evidence or any witness in rebuttal the additional evidence procured by the appellant. The provision of this rule shall not affect the power of appellate authority or the tribunal to direct the production of any document or the examination. Now we'll read appearance by the authorized representative, section 116. Sir, pre-deposit is already while appealing with the appellate authority. Then for 80, only difference. नहीं. हेमंत, let me go back. वापस मैं आऊंगा. एक बार मुझे वापस आता हूं. आपकी जो प्री डिपॉजिट है दो लेवल पर है. फर्स्ट अपील पर 10%, सेकंड अपील ट्रिब्यूनल पर एडिशनल 20%. तो टोटल कितना जमा हो जाएगा? 30% जमा हो जाएगा. तो यहाँ का परसेंटेज अलग है और यहाँ का ओवर एंड अबव दैट परसेंटेज है. इट इज नॉट डिफरेंशियल परसेंटेज. तो मतलब अगर आप बात करेंगे कि किसी केस में अगर आप ट्रिब्यूनल फाइल करते हैं अपील तो यू आर पेइंग 10 एट फर्स्ट लेवल and 20 at second level as per the amendment applicable for your exams. It is not differential. हेमंत एक बार कंफर्म करना. is that understanding clear? ठीक है ना? 20% is in addition to 10%. 20% is in addition to 10%. एक मिनट रुको यार. एक अंडरलाइन किया था वर्ड हमें जब डिस्कशन कर रहे थे मैंडेटरी प्री डिपॉजिट. तो वहां पे एक वर्ड अंडरलाइन किया था. देखो ये वाला, इन एडिशन टू अमाउंट डिपॉजिटेड टू द अपीलेट अथॉरिटी. ये जो 20% ऑफ द रिमेनिंग है वो इन एडिशन टू द अमाउंट, मतलब जो 10% आप जमा करवा चुके हो उसके ओवर एंड अबव है. तो 20 + 10 टोटल 30% डिपॉजिट हो जाएगा. क्लियर? एक बार कंफर्म करना. इज दैट क्लियर? फाइन. ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं. नॉर्मली क्वेश्चन आता है क्या सीए कैन अपीयर इन द ट्रिब्यूनल? एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड or required to appear before the officer or the appellate authority or the tribunal in connection with any proceeding under the GST may appear through authorized representative except when is required under the act to appear personally for examination on oath or affirmation. Who can be the authorized representative? Broadly, any authorized representative can be relative, regular employee, advocate, or chartered accountant, or cost accountant, or company secretary, or the GST practitioner. It is also provided that specified indirect tax gazetted officer having served for at least 2 years can appear as an authorized representative, but they can appear only after 1 year from the date of the retirement or resignations. क्या disqualification है? The GST law provides some disqualification. क्या है? Who has been dismissed or removed from the government services, who is convicted of an offence commenced with any proceeding under the GST law or under the earlier law or under any of the act passed by the state legislature imposing the tax on sale of goods or supply of the goods or services, who is convicted an offence connected with any proceeding under GST or pre-GST, who is found to be guilty of the misconduct by the prescribed authority, who has been adjudged as an insolvent,
shall be qualified to represent any case for all time. कब? A, B और C और D के केस में, insolvency के केस में, the period during which the insolvency continue in case of the person referred to in clause D. मतलब यहाँ A, B और C के केस में फुल लाइफ टाइम आपकी वो रहेगा डिस्क्वालिफिकेशन, और फोर्थ केस में डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा उतने पीरियड तक जितने पीरियड तक इंसॉल्वेंसी कंटिन्यू होती है. Any person who has been disqualified under the provision of CGST Act, SGST Act, it will be considered as under SGST Act. Now, financial and administrative power of the president. The president shall exercise the prescribed financial and administrative power over the tribunal. Appeal to the High Court. The law provides that any person aggrieved by any order passed by the state bench or the tribunal may file an appeal to the High Court. The High Court may admit the appeal if it is satisfied that the case involves substantial question of law. Appellate Tribunal is the final fact-finding authority. क्यों? हाई कोर्ट में अगर मैटर जाएगा तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाएगा, ना कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे जाएगा. Substantial question. Just quickly confirm, appeal is the statutory right or fundamental right? Quickly confirm in the chat whether appeal is the fundamental right or appeal is the statutory right. Please confirm whether appeal is the fundamental right or appeal is the statutory right. Statutory right, absolutely correct. Substantially question generally mean question that must be answered by applying relevant legal principle to interpretation of law. This is distinct. Substantial question generally mean question that must be answered by applying the legal principle to interpret the law. This is distinct from a question of the fact that must be answered by evaluating the relevant fact or evidence as well as inference arising from the fact. एक बात बताना मुझे, just confirm one thing. We have discussed at one place that उसमें जो मैटर इन्वॉल्व है दैट शुड नॉट बी क्वेश्चन ऑफ लॉ. तब तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा या कुछ मतलब ये जस्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं. वेयर वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट, द सब्जेक्ट मैटर शुड नॉट हैव द क्वेश्चन ऑफ लॉ, तभी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा. वेयर वी हैव डिस्कस दिस पार्ट. माय गॉड. In case of, very nice Prashant, very nice R Prashant. Single bench hearing the appeal. मतलब अगर आपका जो क्वेश्चन है वो does not belongs to law, amount does not exceed कितना लाख, amount does not exceed 50,000 की 50 lakhs, 50 lakhs या 50,000, 50 lakhs. prior approval of president and subject to such terms and condition. अगर ये चारों बातें हो जाती है तो then that matter can be heard by a single bench also. ठीक है. Unlike answer of question of fact which are dependent on particular circumstances or factual situation, answering the question of law being based on the legal principle can be applied to many situations. Recently, Supreme Court in the matter of Nazir Mohammed versus J. Kamla and others on 27 August 20 pronounced that to be substantial, a question of the law must be debatable, not previously settled by the law of the land, or any binding precedent must have the material bearing on the decision of the case and the right of the parties before it if answered either way. एक बार रीड करते हैं. इस केस में क्या कहा उन्होंने कहा, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ मस्ट बी डिबेटेबल, नॉट प्रीवियसली सेटल्ड बाय द लॉ ऑफ द लैंड और एनी बाइंडिंग प्रेसिडेंट, मस्ट हैव द मटेरियल बियरिंग ऑन द डिसीजन ऑफ द केस and or the right of the parties before it if answered either way. For instance, the question as regarding applicability of an exemption notification to a taxpayer due to the two possible interpretation of the notification could be a question of law. Conversely, determination of the quantum of exemption available to the taxpayer could be a question of fact.
Time limit to file the appeal to the court, that is 180 days. From the appeal, from on which the order appealed against is received by the aggrieved person. However, the High Court has the power to condone the delay on being satisfied sufficient cause being shown. यहाँ पे कोई टाइम लिमिट लॉ में फिक्स नहीं किया कितना कंडोनेशन मिलेगा. Appeal will be in the APL 8 decision on being satisfied that a substantial question of law involved. High Court shall formulate that question and the appeal shall be heard only on the question so formulated. However, High Court has the power to hear the appeal on any other substantial question of law if it is satisfied that the case involves such question. The High Court shall decide the question of law so formulated and deliver the judgment thereon containing the ground on which the decision is founded and may award such cost as deemed fit. The High Court may determine any issue which has not been determined by the tribunal or has been wrongly determined by the state bench by reason of the decision on question of law. The Code of the Civil Procedure relating to the appeal to High Court shall apply to the appeal before the High Court under this section. Okay. Appeal shall be heard by a bench of not less than 2 judges, and the point on which they differ, if any, then it shall be heard upon that point only one or more judges of the High Court. Final judgment on the point shall be decided by the majority of all judges who heard the case, including who first heard it. Deposit of all the tax due is required to be made, otherwise the inherent power of High Court had to be invoked for obtaining the stay pending disposal of the appeal. एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि मैटर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन स्टेट बेंच टू द अनदर स्टेट बेंच विद इन द स्टेट. वो क्या था? अगर किसी डिसीजन पर अगर मेजोरिटी ऑब्टेन नहीं हो पाती है तो दे विल पॉइंट आउट एंड दे विल रेफर द मैटर टू द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे उस केस में? व्हाट द प्रेसिडेंट विल डू इन दैट केस? अगर तो पर्टिकुलर हमने केस जो हमने डिस्कस किया था कि मैटर कैन बी ट्रांसफर टू द अदर स्टेट बेंच और विद इन समथिंग लाइक दैट, तो क्या प्रोविजन था? करेक्ट. अगर वो स्टेट बेंच का है तो विद इन दैट स्टेट वो किसी और बेंच को रेफर कर सकते हैं, मतलब अदर स्टेट बेंच को रेफर करते हैं विद इन द स्टेट. अगर उस स्टेट में एक ही बेंच है तो किसी दूसरे स्टेट बेंच को रेफर कर सकते हैं. अगर वो मैटर किसका है? बाय द मेंबर ऑफ द प्रिंसिपल बेंच, तो किसको रेफर करेंगे? द अनदर मेंबर ऑफ दैट प्रिंसिपल बेंच. अगर कोई नहीं है तो वो फिर मैटर किसको जाएगा? मेंबर ऑफ द स्टेट बेंचेस ऑल्सो. Difference of opinion. Yes, absolutely correct. Last fact finding authority कौन है? Who is the last fact finding authority? Who is the last fact finding authority? Tribunal. Correct. Appellate tribunal. Whether appellate tribunal is functional, whether appellate tribunal is functional in the current date? No. तो अगर अपीलेट अथॉरिटी का कोई डिमांड है, इफ देयर इज एनी डिमांड ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी, इफ देयर इज एनी डिमांड ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी, तो वो उसकी रिकवरी कैसे स्टे होगी? बिकॉज वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द अपील, वी कैन नॉट फाइल द अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल. तो अपीलेट अथॉरिटी की जो डिमांड है, फॉर विच आई लाइक टू डिस्प्यूट द मैटर, आई लाइक टू लिटिगेट, तो उसकी डिमांड कैसे स्टे होगी? What we should do,
so that my demand would be stay on the order of AA, Appellate Authority. Correct. We have to deposit this amount through one navigation in the portal. जो भी अपना डिपॉजिट है वो जैसे मैं डिपॉजिट करूंगा इन दैट केस, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट करने के बाद क्या करना पड़ेगा? व्हाट आफ्टर दैट? आई हैव डिपॉजिटेड द अमाउंट. फर्स्ट आई हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट. सेकंड आई हैव टू, मैंने डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद कुछ और करना है. सेकंड आई हैव टू डिपॉजिट कर दिया. सेकंड आई हैव टू, नहीं डीआरसी 038 का लिंकिंग नहीं. आई हैव टू राइट द लेटर टू माय जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर अलॉन्ग विद द पेमेंट कि भाई जब भी वो अपील ओपन हो जाएगी अपीलेट ट्रिब्यूनल की तो मैं आई विल फाइल दी अपील. ठीक है. वो जो बैलेंस डिमांड है दैट विल बी स्टे. नाउ व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फाइल द अपील टू द हाई कोर्ट? व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फाइल द अपील टू द हाई कोर्ट? कितना टाइम है हाई कोर्ट के लिए? 180 days. एंड कितना परसेंटेज ऑफ प्री डिपॉजिट है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ द प्री डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड? हाउ मच परसेंटेज ऑफ द प्री डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड? कोई प्री डिपॉजिट नहीं है सर. नो प्री डिपॉजिट. नो प्री डिपॉजिट इन केस ऑफ हाई कोर्ट. विच मैटर विल डायरेक्टली बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, नॉट बाय हाई कोर्ट. कौन सा मैटर है, कौन सा ऑर्डर है जिसकी अपील हम हाई कोर्ट की जगह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को करेंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट. इफ इट इज ए कौन से मैटर की अपील डायरेक्टली, कौन से मैटर के केस में, कौन से डिसीजन और ऑर्डर के केस में हम अपील हाई कोर्ट में नहीं करेंगे? वी विल डायरेक्टली डू द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. दैट इज प्रिंसिपल बेंच का कोई ऑर्डर है. करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट्स मूव फर्दर. अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. Law provide for the appeal to the Supreme Court for any judgment or order or decree passed by the High Court in any case which on its own motion or on an application made by the party aggrieved immediately after passing the order, the High Court certified to be fit one for appeal to the Supreme Court. A direct appeal shall lies to the Supreme Court अगर वो principal bench का case है तो. The provision of the Code of the Civil Procedure relating to the appeal to the Supreme Court, the provision of the Code of the Civil Procedure relating to the appeal to the Supreme Court shall also apply to appeal before the Supreme Court under this section. Deposit of all the tax dues will be required unless stay is obtained from the Supreme Court pending the disposal of the appeal. The Supreme Court can vary, confirm, reverse, or tribunal reverse the order of the High Court Tribunal as the case may be and award cost. It can also remand the matter for fresh consideration. Sum total to be paid notwithstanding appeal, etc. Some dues to the government as a result of the order passed by the principal bench of the Appellate Tribunal or High Court. Notwithstanding that appeal has been preferred to the High Court, Supreme Court shall be payable in accordance with the order so passed. Will not be filed in certain cases. Section 120 कहता है कि अपील आप फाइल नहीं कर सकते. In the tax dispute, the tax department is always an opposite party. From a practical standpoint of view, many appeal at the tribunal, high court or Supreme Court level are instituted by the tax department. This section contains provision that aim at limiting the filing of the appeal by the CGST officer in non-complex matter or the matter involves small tax amount, while providing for non-filing of appeal by the CGST in certain cases. This section also provides that such steps should not stop the tax department to file the appeal in other similar cases. Board, on the recommendation of the council, issue order, instruction, direction, fixing the monetary limit to regulate the filing of the appeal. मतलब क्या है? जो board है, board का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of the board? What is the meaning of the board? CBIC. करेक्ट ना? तो सीबीआईसी क्या है? कोई भी ऑर्डर इशू कर सकता है या इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है, डायरेक्शन इशू कर सकता है. क्या चीज के लिए? फिक्सिंग द मॉनेटरी लिमिट. ये मॉनेटरी लिमिट किसके लिए एप्लीकेबल होगी? सिर्फ जीएसटी ऑफिसर के लिए. इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द टैक्स पेयर. ये मॉनेटरी लिमिट क्यों फिक्स करते हैं?
ताकि अननेसेसरी हर मैटर में अपील ना फाइल हो। नॉन फाइलिंग ऑफ appeal or application by the GST officer on account of the such monetary limit shall not preclude the officer from filing the appeal in any other case involving the same or similar issue or question of law। मान लो कोई मॉनेटरी लिमिट के कारण लेट से एक केस में अपील फाइल नहीं की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही सिमिलर केस कभी दूसरा आया हैविंग द हायर अमाउंट, उसमें भी अपील फाइल नहीं होगी। यस, इसको सेम प्रेसिडेंस नहीं मानना है। यहां पर आपने अपील फाइल नहीं की बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी लिमिट, बट अगर ये सेम मैटर कभी बाद में आया एंड हैविंग द हायर मॉनेटरी बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट कैन फाइल द अपील। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पीओएस वाला मैटर थोड़ी जाएगा। एक तो पीओएस वाला मैटर जाएगा तो उसमें रिवर्स ऑर्डर किसका करेंगे? ट्रिब्यूनल का करेंगे। और बाकी जो मैटर है अदर देन पीओएस, जो स्टेट बैंक से हाई कोर्ट के पास में गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास में गया, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर सकता है। इट इज नॉट पीओएस अदर देन पीओएस जिसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। पीओएस में we all know that it cannot be routed through high court, it can directly go to the supreme court। No person who is party in application or appeal can contend that CGST officer has acquiesced in the decision on the disputed issue by not filing an appeal on account of the monetary limit। The appellate tribunal or the court hearing such appeal or application shall have regard to the circumstances for filing the appeal or application by the CGST officer on account of the non-monetary limit। Now the clarification जो आया है, what is the limit they fix? Following limit have been fixed for filing the appeal, application, SLP, special leave petition by the department before the G state, high court, supreme court। कितनी monetary limit है? G state के केस में 20 लाख, high court के केस में 1 करोड़ and supreme court के केस में 2 करोड़। It is a new amendment, so it is very important from exam perspective also। Amount to be considered for filing the monetary limit, अगर सिर्फ डिस्प्यूटेड किसका है? टैक्स का है, विद और विदाउट पेनल्टी, विद और विदाउट इंटरेस्ट, तो सिर्फ आपको क्या कंसिडर करना है? टैक्स ओनली। एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस, सबके सब कुछ मिला के। अगर डिस्प्यूट खाली इंटरेस्ट के रिगार्ड में, तो मॉनेटरी लिमिट जो 20 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, इस मॉनेटरी लिमिट में टोटल किसका काउंट करेंगे? सिर्फ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का। पेनल्टी ओनली तो पेनल्टी का, लेट फीस ओनली तो लेट फीस का, इंटरेस्ट भी है, पेनल्टी भी है और लेट फीस भी है, तब एग्रीगेट कर देंगे सबका। एरोनियस रिफंड है तो अमाउंट ऑफ रिफंड का। मॉनेटरी लिमिट शैल बी अप्लाइड ऑन द disputed amount of tax, interest, penalty, late fees in respect of which appeal is contemplated to be filed in a composite order which involved more than one appeal, demand, notice, the monetary limit shall be applicable on the total amount and not on the amount involved in the individual appeal। Exclusion इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कब ऊपर वाली जो लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी? जहां पर provision of the GST law has been held to be ultra virus to the Constitution of India। जैसे आपको ध्यान होगा, एक मोहित मिंडल का जजमेंट था, आपने शायद आरसीएम के चैप्टर में डिस्कस किया होगा, रिवर्स चार्ज के केस में, जहां पे ओशियन फ्रेट के ऊपर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आरसीएम की डिमांड की जाती थी, दैट वाज हेल्ड अल्ट्रा वायरस। ठीक है, सो अगेन तो उस केस में वो डिसीजन, मतलब ये मॉनेटरी लिमिट शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस where the decision to file appeal shall be taken on merit irrespective of the monetary limit, where any rule or regulation made under GST law have been held ultra virus to the Parents Act, where any order, notification, instruction, circular issued by the government has been held ultra virus to the GST law, where the matter is related to valuation, classification, refund, POS, and any other issue which is recurring in the nature and or involve interpretation of the provision of the act, rules, regulation, notification।
तो ये क्या है, ये थोड़ा बड़ा पॉइंट हो गया। अदरवाइज उन्होंने 4 तो स्पेसिफिक कह दिया, वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, रिफंड और पीओएस, और 5वां कह दिया कोई ऐसा मैटर जिसमें इन्वॉल्वमेंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ का, तो वो मैटर भी मॉनेटरी लिमिट के कारण डी बार नहीं होगा। मतलब अगर कोई क्लासिफिकेशन है और अमाउंट डज नॉट एक्सीड 20 लाख, क्या डिपार्टमेंट उसकी अपील कर सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि जो ऊपर वाली लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी अगर मैटर वैल्यूएशन से है, अगर मैटर क्लासिफिकेशन से, अगर मैटर रिफंड से, और अगर मैटर पीओएस से। वेयर एनी स्ट्रिक्ट adverse comment have been passed and or the cost has been imposed against the department. ठीक है? Any other case where it is necessary to contest in the interest of the justice. ठीक है? Non-filing of the appeal based on the above limit shall not preclude the tax officer from filing the appeal in any other case having the similar fact, but जहां पे अमाउंट कितना एक्सीड कर रहा है, मॉनेटरी लिमिट से एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में टैक्स ऑफिसर अपील फाइल कर सकता है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भैया जब पीछे वाले टाइम में तुमने अपील फाइल नहीं की तो अब क्यों अपील फाइल कर रहे हो। इट डजंट मीन दैट मॉनेटरी लिमिट के कारण अगर एक बार अपील फाइल नहीं होती, सेकंड टाइम में सेम मैटर आता है बट लिमिट ज्यादा है, एक्सीडिंग मॉनेटरी लिमिट है, देन अपील कैन बी फाइल्ड बाय द टैक्स ऑफिसर। लास्ट पॉइंट है, कुछ एक डिसीजन या ऑर्डर नॉन अपीलेबल होते हैं। सेक्शन 121 कहता है ये जो डिसीजन है या ऑर्डर है इसके अगेंस्ट में अपील नहीं होगी। एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर डायरेक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ द प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर, सीजर और रिटेंशन का है, प्रोसिक्यूशन का है, या ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 80 फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट का है। इन दिस केसेस में आपकी अपील फाइल नहीं होगी। व्हाटसोएवर कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग ऑर्डर। From my side, this today class is completed. Any question? Happy to take that question. Otherwise, last 5-10. Now I will hand over the session to Sefali ma'am. They will proceed for the balance part. Sefali ma'am. Yes, sir. I think I need the rights to start my video from the host. Ma'am, मैं दे देता हूँ. Achha. And also to share the screen because I want to take the students to the this section wise weightage today. अशोक जी, आपको मैम को, अच्छा मैम को पोस्ट बना दिया। मैम एक और भी है, उसमें भी आपको होस्ट बना दीजिए। अशोक जी 2 हैं, 2 लॉगिन किया हुआ मैम ने। हाँ 2 लॉगिन है एक्चुअली मेरे। आई थिंक एक वीडियो सेकंड लॉगिन में भी बनाना पड़ेगा। ठीक है मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू। In fact, today's topic as well as the topics which we have covered in last 2 sessions, that means the demand and recovery, and then the offenses and penalties and appeals and revisions. These are one of the most important topics which are there in our indirect tax laws, not only from practical point of view, but also from examination point of view. If we see the weightage of these 3 topics along with the advanced ruling, which will be held in the next class on next Saturday, they together comprise of almost 15 to 20 marks. The questions based on these topics are almost 15 to 20 marks questions are asked in the examination we have seen. And this, in fact, if we see I want to take the students to the section wise weightage also. This is our BOS knowledge portal. I hope the BOS knowledge portal is visible to you all. Anybody can answer. Okay, so it is visible. Yes. So in this on this portal, if you see that there is a section wise and skill wise weightage which is being provided. Now for final paper, this is the weightage. In the last, we have this indirect tax laws section wise weightage. In fact, skill wise weightage is also there here. So were you people aware of this section wise weightage? Have you gone through the section wise weightage earlier also? If somebody can provide me in the chat box the answer to this, or you can unmute yourself and tell me that whether you have actually gone through this section wise weightage earlier.
Okay, in the beginning you have gone through this. Okay, because this is also very important when you are preparing for the examination. Though everything is important from the examination point of view, nothing is no topic you can leave for the examination, but your efforts for each topic should be based on the weightage which it carries in the examination. So if we see the topics which have been just covered in past few classes, demand and recovery, offenses and penalties, and appeals and revision, along with advanced ruling, which will be covered in the next session, ethics under GST, they together comprise of 15 to 30% of your total weightage of the question paper. And therefore, almost 14-15 marks questions are generally asked from this section. If you see the past question papers, you will get an idea. So they are very important from the examination point of view as well as from the practical point of view. So hope all of you would have been very attentive in these classes, and sir has actually covered them wonderfully in past few sessions. I have seen that all your queries have been answered. You have been made to memorize the important points during the session itself, and wherever there is some important point which you need to note, some exception, some exclusion, that has also been adequately highlighted in the class. So I hope these topics are clear to you. Yeah, Prashant is saying in one of the lecture it was covered by someone from BOS. Okay, I think I myself covered it in one of the customs classes. So, but I was not sure whether you were there or not in those classes. Okay, so just to take you through this section-wise weightage once again, all the substantive provisions of the law, if you see the levy, then the concept of supply, reverse charge mechanism, exemptions, place of supply, time, value, then ITC provisions, they are mainly in section 1, and the weightage of this section is 45 to 65%. So almost half of the paper will be from this section. This is provided by the section wise weightage itself, that more than 50, almost 50% of the paper, it can be more also, from this particular section. So all first 7-8 chapters, they are very important from the examination point of view, and your thrust should be on this. Okay, so asked a query at okay, you have asked a query, Prashant, and then you got the answers. Okay, so that is not a issue. So at least you were aware of it, and others have also got an idea. Then we have the procedural part. Now the procedures under GST plus refunds, job work, liability to pay in certain cases. Now these topics comprise of 10 to 30% of the total weightage. So this is also they also comprise of a significant weightage. They also have a significant weightage, but as compared to the substantive portion or the core provisions of GST, their weightage is comparatively less. So your efforts have to be in accordance with whatever weightage we have been assigned for examination point of view. From understanding point of view, everything has to be understood. You have to go through each and every topic. But when you are preparing for the examination, in fact, when you're revising day before examination, then also your efforts should be accordingly categorized, or efforts should be prioritized, that yes, this is the topic which I have to do first. I should be very clear in all the substantive provisions. Then I will come to the enforcement provisions, which we have just discussed in few classes: demand, recovery, offenses, penalties, then the appeals and revisions. Advanced ruling will also be taken in the next session. Then comes the procedural portion, and last comes your administration of GST, assessment, audit, inspection, search and seizure, and the miscellaneous provisions. Their weightage is 0 to 5%. So there is a possibility that they might not be asked, and even if they are asked, their weightage is 5%. So this gives you an idea that what your overall paper or the weightage of the overall paper will be from different sections, how the questions will be asked. In fact, on the website, we have given you the study guidelines also, which apprises you of the topics which are not relevant or which are excluded from your syllabus by way of the study guidelines. Now, it apprises you of the applicability also, which in yesterday's class also, I told you that this is the position of law which is applicable for you for the examination. This is the previous study guidelines. In fact, I think May 25 study guidelines we have yet to be hosted, but I will tell you in a broadly what are the study guidelines for May 2025 examination. And in fact, they will be very soon hosted on the website also for your reference. For May 2025 examination, we know that the position of law which is applicable is 31st October 2024, as discussed yesterday. Plus, the some of the provisions like real estate provisions are not there in your syllabus.
And the transitional provisions, they have been excluded way back when their their applicability or their relevance got diminished. So we have excluded them from your syllabus. So these are the major exclusions. Otherwise, at final level, almost everything is covered. The rate of taxes. Now, rate of taxes will be provided to you in the question itself. You need not remember for goods as well as for services. Reverse charge provisions for goods as well as for services is there in your syllabus. So in the earlier scheme of education and training, so prior to May 2024, the reverse charge for goods was not there in your syllabus, but now from May 2024 onwards, the reverse charge for goods has also been included. In fact, you can see that there are questions in RTP also, and in examination also, questions based on reverse charge for goods have been asked in the examination. Then the exemption for goods is excluded from the syllabus. Exemption for services is there. You have a dedicated chapter exemption from GST, which is there in module 1. But for goods, just a few basic idea has been given to you because it is not relevant for the examination. See, these are some of the basic exclusions which are provided in the study guidelines. And applicability also I have already discussed in detail that yesterday itself I have told you. So you have to keep these things in mind while preparing for the examination. So I hope this helped you. Yes, Hemant is asking for MCQ same weightage. Yes, this weightage which I am talking about, it is MCQ plus descriptive portion. So if I say the substantive portion is 45 to 65%, so this will be there in the case scenarios plus the descriptive portion. Overall, the weightage of the substantive portion. So some questions will be asked in the MCQs based on the substantive law and descriptive portion also. If you see the first question which we discussed yesterday, compulsory question, it is basically from the substantive provisions, section 1. And it has a full 14 marks question is coming from there. Despite case scenario based questions, primarily a majority of the questions are there from section 1. Then we have procedural and other portions. So this is how the allocation of or section wise weightage has been divided between various sections of the syllabus. Okay. So I think with this we can conclude this session. Anything anybody wants to ask, you can ask in the chat box or you can unmute yourself for asking the query. So I hope no queries there now. So with this, we come to an end of the session. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Yes, session is over.